Good morning. We just now marked the previous day. Morning. We just now marked the previous day high and low. So, if you have a look at what the options are telling about, just let's have a look at options first. So what I saw over a weekend, in fact, I had published a video also how the week is going to be this week. I'm not sure that you've seen it or not, but still, 25,500 and 600 as tremendous amount of call writing, meaning that it's going to be a big struggle to cross this. Also, if you had seen that video, we would have talked about a gap that needs to get filled up. Nifty is in the process of filling it up, so that's also you can see one second. We close this BTC Bitcoin alerts, because otherwise they will keep popping up. Okay. This is April. There is one more here, so it is filling up this gap only.
So you can see the gap. So I think this gap it is to fill up. That is needed. In fact, even in our Telegram channel, we talked about this, and we said this gap has to be filled. Otherwise, there is one more gap even below this. So we are not sure whether Nifty is going to fill that also. If that happens, then it is even another 1,000 points down. So these two gaps, technically, at some point it has to fill. There is no way without filling Nifty can go up. That is how the technicals work out. So, am I audible? If so, please say yes. Okay, I must be. I take it as an yes now. Good. So it is Nifty is at 8 points up now in the preliminary pre-market, and let's see how which one is supporting even these 8 points. So we have from heavyweights, HDFC starting off with slightly green, HDFC and Reliance, and Kotak Mahindra Bank is also on positive, L&T and Bharti Airtel and State Bank of India, M&M. Surprisingly, Tata Motors is up despite the results. Maybe the positioning before the results was negative.
Good morning. So market is defending yesterday's low as of now, and it is now pumping up. Let's see.
2535.
Good morning. We are given one call. I don't know. You joined earlier. If you joined earlier, no, we gave a call at 151. The 24,500 put because as you can see very clearly in the chart, the price went up to the pivot and started rejecting there. It has to at least reject. That is the reason we were waiting for it and gave. Now it is already crossed 177. The price. So I don't know whether you taken it earlier or not, but I think you still let me see how far it will go. Oh, okay. If it stays above 172, no, 177, then it is going to go up substantially, meaning the next first target is going to be at 241. 241 will be the first target. Now let us shift the stop loss. Since it is already 185, $169 will be the stop loss now, revised. Okay. So let us not lose the profit that has already been made, because pocket in the money only counts, not in the screen. At least not only we should not lose the capital, but also we should not lose some profit of it, because we would have paid some charges, correct? So let us see whether it maintains above 173, 174. If it does that, then we have come up with a new exit strategy. So that is going to help us a lot in exiting the options. See, there you go. This is precisely the reason we wanted to have the stop loss. See, at least now what we have made of is around 1,300 rupees. Stop loss hit. Profit 1,260. Good. Now we have to wait again. It should find support at 148, 149, at least this option. And meanwhile, Nifty, what we are seeing is there is a good amount of green here, 3 green dots, meaning that there is slightly momentum building on the buyer side. And also we have a green bar here. See, Nifty has a very huge
24,500 call writing. So maybe it will do up and down today for some time, and then we either one of the way, one side it may break down or break up. Let's see, because it's a bit an oversold position. The FIIs and the so-called pros, they are heavily on short side. They have been long put short call. I think if you see the statistics of FIs, and pros, they are in huge volume long put and short calls. So that meaning that they are expecting the market to fall. The client, the retailers have all gobbled up all these calls. So we don't know who is. This is what normally happens. You will find pro and FIs on one side would be selling. If they think the market is going to go up, they will be selling continuously put, and we will see the retail population buying that put, thinking the market will come down. So they will do a lot of bear trap so that the puts will be sold. Similarly, when they think the market is going to go down, they will do a lot of bull trap. Currently, at least from the statistics, FIs and Pro are looking for a downward looking market. We have also talked about in the morning, I don't know how many of you there at that time, that there is a gap that needs to be filled. So in my view is that this particular gap, let me try to show you again. Nifty super chart. These two gaps. So these two gap needs to be filled. So yesterday on Friday we entered this gap, and it is hovering out here. It has to at least close this gap. So it has to touch once at least 24,160. So it will happen. See that again the put has spiked. It made a stop until 144. Now it is again 174. But anyway, our stop loss has already been hit. Let's see again. Now, once any other opportunities, then we can take it again. So as I was saying, if if Nifty goes below this point, 24,146, then then it has to find support only somewhere down at 23,751. Which is another 600 points, and if continues to drop, then it can go even down to up to 23,000. So that is a possibility, technical possibility. If it doesn't close these two gaps in this round, if it closes only the above gap, at some point the Nifty will come back and close the second gap also. Technically they say that will happen, but of course it is not 100% sure. There are certain gaps in the past that Nifty didn't fill up, and then continued its momentum on the side, opposite side. Let's see what happens. See, the problem now is there are no triggers. The only trigger can be is that crude going down dramatically. In our week ahead program, we talked about it. That Nifty week ahead, that how much far down the crude can go down. The crude can go down up to even $46. That will be a good positive for Indian markets. Not only, especially for Bank Nifty, usually it has a very inversely proportionate relationship with crude price. Now, not only when crude price goes, what is the other side effect is the dollar index also will drop down. So then your import cost will go down. Of course, exporters will suffer, but import cost will go down. Anyway, we need to see how this week it behaves. On weekly chart, the Nifty made a very negative candle.
Even if you look at day chart also, it has been continuously from here, almost what, from 25,548, it has been making continuously lower, and yet yesterday also, on Friday also, very marginally, 1 or 2 points it made a lower low. So technically the market is weak and option stats is stacked against it. Back to our strategy chart. So the first one trade has already been completed. Let us wait for another, because it is the Nifty as well as the option price is moving within this tight range. So it will tempt you at the edges. So let us check at when it reach one of the boundaries. So if Nifty goes down to up to here and it tries to break yesterday's low, we will take this call again, this put again. So keep a watch on this volume also. As long as it is in positive, you will find that Nifty making green shoots and green candles. If this becomes red, you will find on the top this thing. So this volume candle and this Akshaya Patra's momentum meter, that will give you broadly, this momentum meter has almost 6-7 indicators on the back end. Based on that, it is giving you a picture that where Nifty is heading. If all greens are there, you can see, for example, here again, everything is turning into, from here everything is turning into green. So from 24,441, it made a top of almost, see here, 24,634. This was on the last Thursday. We also captured this move in our option buy. In fact, so far, all the option calls which we started giving from 4th of August, this move that we captured from here to here, I think we bought somewhere around 42 rupees or 50 rupees a call, 24,450 or 23,550. 24,350. I think we sold it around 157 rupees. So far, that was the good, most profitable trade, if I remember correctly. So, and then once it started to becoming red, the market started to fall, and once become some 3 or 4 dots becomes red here, you see the market is falling continuously. So even now, market will be in sideways when you have mixture of reds and greens happening in second line, third line, because each line represents a leading or a lagging indicator on the back end. So it will keep happening. Again, if you see from here, you see here actually they all become red, and also our magic line, the price is below our magic line, and you will see volume. So actually this chart will give you when to enter and when to get out, basically. So let it shuttle between 24,440 and 20. What is this price? Yesterday's low. I don't know whether it touches. Yeah, 24,340, 100 points. Let Nifty shuttle up and down, and we will wait for some clear signal. We will wait for this to become red,
and all this become to red, and then we will buy put. If vice versa happens, if all this is green and this becomes green, then we will buy call. See, the option details that we are providing is for only one lot basically. So depending upon your risk capability, I think you should take. I always strongly suggest that first you start with only one lot and then you make. As as you start making more and more money and becoming more confident in dealing with options, then you can. Again, this option is trying to cross 179. NIFTY is weakening, and I'm just checking. Again, I think you can take this call again. I mean, this put one more time. It is quoting around 181, 182. But the thing is, the stop loss is way down 160. So there is a bit of risk. But the next candle is, at least starting up. As long as this green dot is there, suddenly things can change. So we will wait for this candle to close and see where this dot ends up. If this becomes be ready, then we will enter into the same put again, and 194 is the first target, and then 220 will be the next target. If you are taking it now, it will be 174 will be the stop loss. $9.49 at again. Yeah, all red now. 187, 188. SL at 167. I think if price is coming down, you can take it at 182 itself now. Oh, see, this is the problem.
Before the candle, some just few minutes back, everything was red. Now with a small jump, no, this is becoming green. But the option price is very strong. So not to I think we don't have to worry much there. The volumes are very low. No, I think they are trying to maintain the market with a very low price, low volume. We may see a stop loss candle now again. Stop loss hunting candle now. See, they brought it down to 177, would have cleaned up lot of stop losses, and then again it will go up. Stop loss it.
I think the price should reverse, option price should reverse from 159 because that is the pivot point. Let's see. I think we are in for another slow and grinding day. I think Reliance and HDFC Bank seems to be holding the market up, and to some extent L&T, Kotak, and Bharti. There is a huge jump in State Bank of India. Not sure what is the news. Probably there's a result or something that would have come. I need to check on that. Bajaj Finance is slightly positive. Maruti is way down. Hindustan M&M is up. Tata Motors is up. So there is a possibility that Nifty will try to touch 24,500 and threaten the call rate as there. See, there is a good spike in volume. I think with the results, SBI results have really picked it up. Not only it will help the Nifty to some extent, but also what will happen is all these public sector banks will start performing well, at least for today. Even though they do not have any impact on the index, but the sentiment will be good because they have reported almost a good 12% rise in the net profit. Now I think they are revising, the targets are getting revised by the analyst from 820 to 960 and even 1050. Long overdue. State Bank should be recognized as good as a private bank in profitability and in its financial strength. So at least now it is getting its due. For years and years, it was just under 100 to 200 rupees. Now it is beginning to get the right valuation from the market. Bank Nifty is 110 points up. So there is a possibility Bank Nifty can lift the. But most of the results have already come. So let's see. Good morning. Market is in a kind of a bit range between 24,440 and 24,336. It is within 100 points. It's going up and down. Volumes are all not so high. State Bank of India results is good, so that seems to be propping up both domestic and private banks, public and private banks.
Reliance is also on positive side. Reliance, L&T, Maruti, not Maruti, Bharti. Those heavyweights are pushing the market up or arresting the fall. That is what I would say, because the market is heavily loaded towards downside. Let's see whether it crosses the pivot. If it crosses the pivot, then we can look for one call. Actually, 24,400 call we can see. Otherwise, no, it will bounce down from again this pivot point here, which is around 24,428, and then down tail again towards the supports. Akshaya Patra overall strategy still is in short only. It has not changed. Trading in sideways market is always a challenge, because the premium movement will be very, very narrow, and sudden spurt and sudden drop can take your profits away in a jiffy. At around 10:15 we will see what the option writers have been doing for the last 45 minutes, and whether the call writers are running for cover, but I don't think so, because market is not showing any signs of huge jump up and jump down. So unless suddenly some news comes based on that, no, it can shoot up. But market is a bit oversold, there is no doubt about it. See, from 1 green to 2 green to now almost 4 aspects are becoming green. If this also becomes green, then here it will go here up to, and then to cross it, no, you need to have continuously green dots, etc. Then it will cross and it will try to touch 24,500. So that is at the first time it will come, no, facing the call writers zone. Let's see, can put it here, the call writers zone, and that way people will know once again. Let's just check the open interest. Last 30 minutes. See, they are still writing more and more calls. Almost 10 lakhs calls has been written for 1.39 puts.
for 24,500, and even 24,400 they are still writing calls, even though Nifty at 408 and 409, they are still writing. The reason they will do is, see, Nifty for 24,400 is at 140, expecting that is, and this is a truncated week, correct? 15th August is an holiday and just 4 days. So what, I know, this can end up as a bull trap. You need to be careful. If they take the market to 24,500 today, everybody will try to buy this call, which is at 24,400, and then one swoop they bring it down from 24,500. All this money will be gone. So it always enter, exit, enter, exit. Do not hold. That is the advice I always give. Whether it is stop loss or not should not be in the market for more than 30 minutes. That is one of the reason I am putting time there. The reason is that between 20 to 25 minutes you should take the profit and go away. More like scalping, connecting and reconnecting. Okay.
Good morning. So sometime back at 10:26 we have given another call. This is on 24,400. Was at 141. Now it is at 159. I don't know whether you have been watching it from earlier. If you are watching, then shift your stop losses so that you won't lose the money. This option has this thing to go up to 180, and if it sustains and market tries to threaten the 24,500 call rates, then it can go even up to 200 and 260 also it can go. But for that to happen, Nifty has to cross 24,450. It's already crossing now and sustain above that, and it will try to go to 24,500 and threaten the call rate is there, and around 24,480 we should start trailing the stop loss for this particular option. When the Nifty reaches 24,480, I think that will be again another bit of a resistance for it to cross. What we do is to try to revise the stop losses to that extent so that you don't lose the brokerage also. That is why you would find as soon as the price went up, we immediately shifted the stop loss to 145. So that gives you 4 points, which is roughly 300 rupees per lot. So even if the price come down, you are at no cost, no loss. And let it move up. If it crosses 180, then we will shift it to 170, 175. Otherwise, because Nifty has to sustain above this level, that is 24,431, then only it will attempt towards 24,500. Otherwise, it can come down rapidly also. There will be at least the stop loss hunting candle will be there, but that is gone. That was recent, couple of minutes back drop. So let's see if the next candle starts above this level, that is at 24,438, then we will see a bigger jump towards 24,500. The option price is getting pumped up in heavy volumes, so probably in one sudden spot it should touch 177.
900 வைக்கிறோம். 900 மாற்றணும். அது 165 167 மாற்றுறேன்.
तो निचले स्तरों से देखिए कैसे रिकवरी, आधा फीसदी से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 24,453 के लेवल पर निफ्टी। बैंक निफ्टी भी डेज हाई, 0.25% की तेज़ी 55,266 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप हालांकि फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, लेकिन देखिए निचले स्तरों से आधा फीसदी की तेज़ी के साथ डेज हाई पर मिड कैप भी आ गया। स्मॉल कैप में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, आधा फीसदी तेज 17,480 के लेवल पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ब्रेथ सुधरती हुई अब नजर आ रही है। 1422 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी फिलहाल हो रही है और 1247 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि आज मार्केट में साथ कौन निभा रहा है। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पूरा पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर आप देखते तो शानदार रैली वहां पे एचडीएफसी बैंक ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ, एसबीआई ब्रोकरेजेस काफी बुलिश, एलएनटी टाटा मोटर्स भी इस लिस्ट में शामिल है। वही दबाव बना रहा है आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी खबर के बाद ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी गिरावट है। एचयूएल और बजाज ऑटो में भी आज थोड़ी गिरावट ड्रैग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी आपको वही सारे स्टॉक्स नजर आएंगे, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स जहाँ सपोर्ट करने की कोशिश में, वही आईसीआईसीआई और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश में दिख रहे हैं। लेकिन पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी खराब और शुरुआत इस हफ्ते की अच्छी हुई है। फिलहाल इन लेवल्स पे मार्केट ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन सवाल अहम ये कि अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या आज की तेजी टिकाऊ है या फिर अभी भी कंसर्निंग फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। सब चीज़ पर करेंगे बातचीत, साथ ही पिक्स भी बताएंगे, कमाई के मौके कैसे आप ढूंढें इस मार्केट में, उस पर भी चर्चा होगी। और हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ हैं wavesstrategy.com के आशीष कयाल जी, पृथ्वी धनुमात के हरीश जुजारे जी और यस सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। और शुरुआत अमित त्रिवेदी जी मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी समय बाद आप खिलाड़ी नंबर 1 शो में आए हैं, तो स्वागत है आपका। मार्केट की शुरुआत इस हफ्ते की ठीक ठाक नजर आ रही है, डेज हाई पर, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी आप देखिए स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, पीएसयू बैंक में कैसे रीच कर रहे हैं आप आज की तेजी को, कितनी टिकाऊ लग रही है, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग। देखिए अगर निफ्टी में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5% का करेक्शन लास्ट 6 वीक में देखने मिला है, और कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो वोलेटिलिटी बढ़ी है, इंटरनल ब्रेथ में वीकनेस देखने मिली है। मोर देन 70% ऑफ निफ्टी स्टॉक्स जो है वो शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे है। आज नोट डाउन यस 24,400 के लेवल जो होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक हल्की सी रिकवरी, एक माइनर रिकवरी पॉसिबिलिटी है, बट अपसाइड जो है वो लिमिटेड लग रहा है। मुझे लग रहा है 24,550 तक निफ्टी आ सकता है। तो मोरलेस जो अप्रोच जो रहना चाहिए वो एक्सट्रीमली मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक पे ही ध्यान रखना चाहिए। ओके, ओवरऑल तलाशना चाहिए आपको, अब फिर स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही फिलहाल ज़्यादा समझदारी वाला कदम होगा। आशीष कयाल जी आपकी रीडिंग क्या कहती है, ब्रॉडर मार्केट में भी आज फिर रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी 6 हफ्ते से पेन था मार्केट में, ओवरसोल्ड हो गया था, तो ये रिकवरी स्वाभाविक सी बात है। और अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही क्या आप अमित जिससे सहमत है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही मार्केट में अपना, इंडाइसेस से भी फिलहाल दूर रहे। देखिए श्रेया, जो ओवरऑल बाजार का रुझान है पिछले 7 से 8 दिन में एक भी क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं किया है, तो धीरे धीरे ड्रिफ्ट बिहेवियर है जहां नीचे जा रहा है, लेकिन एक वन साइड डाउनफॉल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरमिटेंट पुलबैक्स देख रहे हैं। जैसे आज के दिन भी करीबन 90-95 पॉइंट से ऊपर है निफ्टी, तो ओवरऑल रुझान जो मार्केट का है वो एक सीमित दायरे में और ड्रिफ्टिंग बिहेवियर है नीचे के साइड में। ऊपर का जो लेवल है 24,490, अगर निफ्टी क्रॉस करके क्लोज करता है आवरली कैंडल, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है। और नीचे का जो लो बनाया था इसने करीबन 24,340 के आसपास कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो देखते हैं कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलता है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यूड रह सकता है यहाँ पर। अभी चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग थोड़ी इमर्ज हो सकती है, काफ़ी सारे स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट आई थी, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न देखा जा रहा है, तो चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके शायद चलना चाहिए। ओके, चुनिंदा स्टॉक्स में फिलहाल अवसर तलाशने चाहिए आपको, यही स्ट्रैटेजी अमित जी और आशीष जी फिलहाल रख रहे हैं आपके सामने। हरीश जी आपसे सवाल मेरा ये होगा कि ब्रॉडर मार्केट पे आपका नज़रिया कैसा है, बहुत मतलब जिस तरीके से मार्केट गिरा, साथ मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी दिया था, ब्रॉडर मार्केट में भी काफ़ी बिकवाली थी, आज वहाँ पर भी हालांकि फ्लैट खोले, लेकिन निचले स्तरों से वहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या स्ट्रैटेजी ब्रॉडर मार्केट्स पे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मार्केट्स में जिस तरीके से पैनलिस्ट ने बताया, बिल्कुल हमने लास्ट हफ्ते में एक बिकवाली देखने मिला था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पुल बैक देखने मिल रहा है, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो में था, और लेकिन जो सपोर्ट जोन था
24,450 से 500 का वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था पिछले हफ्ते में। तो ऑलरेडी निफ्टी उसके नीचे चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इस लेवल्स में रेजिस्टेंस जोन देखने मिल सकता है जो 24,500 के आसपास है। तो उसके ऊपर निकलना ज़रूरी है, तभी जाके हमको एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकता है। मतलब ब्रॉडर मार्केट की पर्सपेक्टिव देखते हैं, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स में जैसे डिफेंस हो गया, वहाँ पे अच्छा खासा बिकवाली देखने मिला था लास्ट 2-3 हफ्तों से, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल रहा है। और जो बिट एंड डाउन स्टॉक्स है वहाँ से भी हमने देख रहा है कि नीचे लेवल से थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत सारे चुनिंदा स्टॉक्स में है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए आज के लिए। बिल्कुल, तीनों खिलाड़ियों का यही मानना कि चुनिंदा स्टॉक्स में ही स्ट्रेंथ है और स्टॉक स्पेसिफिक ही ऐसे मार्केट में आपको अवसर तलाशनी चाहिए। 24,500 के इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए वो ब्रीच करता है तो स्ट्रेंथ थोड़ी दिखा सकता है मार्केट। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए अब स्ट्रैटेजी शुरुआत कर लेते हैं। हरीश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए पहला पिक क्या होगा? बिल्कुल हेल्थ देखा है तो पहला पिक मेरा इटर्नल में रहेगा। देखिए इटर्नल में एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा था कुछ दिनों से और स्लाइटली करेक्शन भी था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से एक बार रिवर्सल होते हुए नज़र आ रहा है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिर से एक बार रैली एक्सटेंड हो सकती है ऊपर के। और टारगेट्स मुझे लग रहा है कि 320 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और करंट लेवल्स पे बाय करने की राय रहेगी, और 295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इटर्नल में। इंटरनल रिजल्ट्स आए थे इसके Q1 के और शानदार जिस तरीके से नंबर कोई कॉमर्स स्पेस में देखने को मिले, उसके बाद से रैली शानदार हुई इंटरनल में। और पिछले आप एक महीने में देखिए 15.5% के ज़्यादा आपके रिटर्न के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी स्ट्रेंथ है, 325 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। एक बार फिर से रखिएगा वो प्लेट, स्टॉप लॉस 295 तक की है। तो ये फिलहाल इंटरनल में आप खरीदारी की राय हरीश जी की तरफ से आती हुई। आशीष जी बताइए कौन सा स्टॉक आप पिक कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर एक CNBC स्टॉक है ఉంటా इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम ఏమిటి से। నేను ये स्टॉक మాట్లాడను में एक Definitely डाउनसाइड बनता था, उसका ब्रेकआउट अपसाइड आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एस्कॉन्स इंफ्रा लिमिटेड में बाय की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट हम देख सकते हैं वो 465 का है, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 410 का लगाना होगा। 410 का स्टॉप लॉस है। कौन से इंफ्रा 4.5% की तेजी के साथ डेज हाई पर यहाँ पर खरीदारी की राय आशीष कायाजी की तरफ से 465 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो फिलहाल ये रिडार पे रख सकते हैं आप। अमित जी बताइए कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है? जी देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्री पे क्या कर सकते हैं। देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री में क्या अगर उसका स्ट्रक्चर समझिए तो अप्रैल महीने के बाद अप्रैल से जून तक एक काफी अच्छी पॉजिटिव ट्रैक्शन आया था, वॉल्यूम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। उसके बाद हल्का सा एक करेक्टिव फेस में ये स्टॉक रहा है, लेकिन ये करेक्शन के दरमियान उसका जो 4000 का जो सपोर्ट है उसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद अगेन आप देख रहे हैं कि आज एक थोड़ा रिलेटेड बाइंग इंटरेस्ट है वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जो हिसाब से 6 वीक में मार्केट में जो करेक्शन आया वो हिसाब से कंपैरेटिवली मैं देखूं तो ये स्टॉक काफी स्टेबल है और रिस्क टू बी फेवर भी काफी फेवरेबल बन रहा है करंट मार्केट प्राइस पे। सो सुप्रीम इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके 4150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 4800 तक करूंगा। 4800 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 4150 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। अप्रैल से जून के महीने में अगर आप देखें शानदार रैली दिखाई थी और लगातार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था, फिर एक कंसोलिडेशन दिखा था जैसे कि अमित जी ने मेंशन किया। फिलहाल 3.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। अमित जी लगे हाथ दूसरा स्टॉक आपको बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए दूसरा जो स्टॉक है वो आदित्य बिरला फैशन है, ABFRL है। ये स्टॉक में ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट करेक्शन आ गया है और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जून महीने में एक पैनिक बॉटम बना था समवेयर नियर 71 के आसपास, और उसके बाद का अगर स्ट्रक्चर अगर समझिए तो कंसिस्टेंटली वो 72 के जो लेवल्स वो होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो मल्टी वीक कंसोलिडेशन फेस है वो थोड़ा मेच्योर फेस में है। 72 का इनफैक्ट से स्टॉप लॉस बन रहा है तो रिस्टोरेबल काफी अच्छा बन रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस पे आदित्य बिरला फैशन बाय करके ऊपर में जो टारगेट मुझे लग रहा है वो 85 तक के 85 की टारगेट प्राइस, 72 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है आदित्य बिरला फैशन और रिटेल में। और आज यहाँ पे बाइंग फिलहाल तो नजर आ रही है, 1% की तेजी के साथ डेज हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हरीश जी दूसरा स्टॉक कौन सा आइडेंटिफाई किया? मेरा दूसरा स्टॉक है आनंद राठी वेल्थ में। अगर देखा जाए आनंद राठी वेल्थ के एक कंसोलिडेशन था और आज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी गया। स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 4% के ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी एक्सटेंड हो सकता है लेवल्स ऊपर के। और मुझे लग रहा है कि ऊपर का टारगेट 2900 के आसपास आ रहा है मेरा टारगेट। तो मेरे करंट लेवल्स को बाय करने की राय है आनंद राठी लिमिटेड में।
वेल लिमिटेड में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2600। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स में अच्छे खासे पैसे बनाए। अगर आप पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को सेग्रीगेट करें तो यहाँ पर अभी भी दाव लगता हुआ नजर आ रहा है। 2900 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड, 2600 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आनंद राठी ने खरीदारी की है आशीष जी की तरफ, माफ कीजिएगा हरीश जी की तरफ से दूसरी पिक है ये। आशीष जी आप बताइए दूसरी पिक क्या होगी? देखिए स्टॉक है नावा के नाम से NAV है, और यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन होने के बाद में आज एक बुलिश कैंडल बनाया स्टॉक ने, तो गुंजाइश है यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। 20 DMA पे सपोर्ट भी लिया है और शायद ये 5th वेव की शुरुआत हो सकती है ऊपर की ओर, तो नावा पे बाई की राय होगी। करंट प्राइस कुछ अराउंड 629 के आसपास है, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 600 का, और टारगेट है 680 का। नवा लिमिटेड 6 महीने में 61% से ज़्यादा का रिटर्न इस पर्टिकुलर काउंटर से जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी आप देखें तो 2.5% की तेजी के साथ डेज हाई पर नवा शानदार रैली दिखाई है पिछले 6 महीने में, 61.75% के पिछले 6 महीने में। आशीष जी एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे? बिल्कुल, देखिए टारगेट जो ऊपर में आ रहा है वो है यहाँ पर 680 का, और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 600 का लगाना है। 600 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, 680 की टारगेट एक्सपेक्टेड है नवा लिमिटेड। फिलहाल ये बाई साइड की ट्रेड। चलिए दोनों पिक्स पूरे हो गए। आशीष जी तीसरी पिक की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताइए लगे हाथ आप ही बता दीजिए तीसरी पिक क्या होगी? देखिए तीसरी पिक जो मेरी यहाँ पर होगी वो है वेदांत फैशंस में, जो मान्यवर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा स्टॉक में करीबन 723 का स्टॉप लॉस आएगा, और ऊपर में जो टारगेट हम इस स्टॉक में देख सकते हैं करीबन 780 का देख सकते हैं। वेदांत फैशन निचले स्तर से रिकवरी डिप आई थी, फिर वहाँ पे खरीदारी होती हुई आज के सत्र में नजर आई। 0.25% की तेजी के साथ 780 का टारगेट, 730 का स्टॉप लॉस। जिस तरीके से अब फेस्टिव सीजन आ रहा है खरीदारी तो यहाँ पे होती हुई नजर ही आएगी। बताइए हरीश जी तीसरी पिक क्या होगी आपकी? अगर देखा जाए तो आज PSU बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल्स पर रिकवरी देखने मिल रहा है। उसमें से यूनियन बैंक रहेगा मेरा बाय का रिकमेंडेशन। अगर देखा जाए तो करंट लेवल्स पे 200 मिलियन से स्टॉक प्राइस रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 142 का चांस है ऊपर की ओर, तो 142 के टारगेट्स के लिए 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। करंट लेवल पर बाय करने की राय रहेगी यूनियन बैंक। यूनियन बैंक 2% की तेजी के साथ, पूरा PSU बैंक इंडेक्स देखें आप तो आज रडार पर SBI लीड कर रहा है 2% से ज़्यादा की तेजी SBI में। और सुबह डिस्कस कर रहे थे काफ़ी ब्रोकरेजेस बुलिश, 1050 तक की टारगेट है SBI में। हालांकि हरीश ने यूनियन बैंक सुझाया है यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से, 142 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। एक बार स्टॉप लॉस का प्लेट रखिएगा फिर से, वो हमारे दर्शकों के लिए दोहरा दूँ। स्टॉप लॉस 130 का आपको मेंटेन करके चलना है फिलहाल। अमित जी बताइए तीसरी पिक क्या होगी आपकी? जी देखिए तीसरी जो पिक है वो GMR एयरपोर्ट है। GMR एयरपोर्ट अगर देखा जाए तो मार्च महीने के बाद ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी सुधार आया है। उसके बाद जून जुलाई में भी काफी कच्ची रैलियां थी, और उसके बाद जो अभी फिलहाल जो करेक्शन आया मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 88 और 87 के बीच मल्टीपल सपोर्ट्स है, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में 100 के जो लेवल से ये स्टॉक रिविजिट कर सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस पे GMR एयरपोर्ट बाय करके 88 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और टारगेट जो है 100 का रख सकते हैं। 88 का स्टॉप लॉस और 100 का टारगेट एक्सपेक्टेड है GMR एयरपोर्ट में। ये खरीदारी की राय डेज हाई पर ये भी स्टॉक परफॉर्म करता हुआ, और ये भी बाई साइड की ट्रेड है अमित जी की तरफ से। चलिए पिक्स की बात हो गई, तीनों पिक्स ले लिए गए हैं। अभी रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सेविंग से आवाज़। माय बर्थडे गिफ्ट टू पापा, ये उनके पापा की पहली गाड़ी एक गराज में पड़ी थी दार्जिलिंग में, फिर 3 मैकेनिक, पेंटिंग, पॉलिशिंग, जब इसे फाइनली घर लाया ना तब लगा लाइफ में ग्रो किया।
होगा। SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कुछ लोग लोकल फ्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैंप देखकर धोखा खा गए और ये है सैनिक 710। लोकल फ्लाई बस वाटरप्रूफ होने पर दावा करते हैं और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ फ्लाई है। तो धोखा मत खाइए। सैनिक 710 सैनिक 710 से నేను రావాలా గమ్ముండా मुंबई से वापस कोल्हापुर शिफ्ट हुआ तो सबने कहा कि ड्रीम सिटी को छोड़ दो। ड्रीम सिटी मैंने कहा ड्रीम में तो यही कभी आती। तो जब ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ बड़ा करने के लिए बड़े शहर में रहने की ज़रूरत नहीं, तब लगा कि लाइफ में ग्रो की। कैसे भाई ऐसे कोई मिलते मुंबई में? चांस ही नहीं। SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। करेक्ट करो, टेस्ट ऑफ सक्सेस। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। करेक्ट करो, करेक्ट करो, द टेस्ट ऑफ सक्सेस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सिंधी आवाज़ पर। आशीष कयाल जी के पास वापस चला जाए। सर, वेदांत फैशन हम नहीं ले पाएंगे, कोई और स्टॉक है जो आपके रडार पर हो? देखिए यहाँ पर एक और स्टॉक जो रडार पे है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। अच्छा खासा रुझान दिखा है, करीबन 6% से ज़्यादा ऊपर ऑलरेडी स्टॉक है। वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त पिकअप हो रहे और यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न भी बना है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1250 का और टारगेट है 1410 का। बिल्कुल, होम फर्स्ट फाइनेंस शानदार रैली के साथ कर रखा है। 1307 ఏం టేబ్లెట్ స్మెల్ లేదు చూడు 1410 के ఫ్రెష్ కాదు ఫ్రెష్ 1250 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। फिलहाल चलिए కాదువే ఇదివే రూమ్ ఫ్రెషనర్ SBI के मैनेजमेंट के देखिए आप पहली तिमाही में SBI के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं और बैंक का मुनाफा 12% बढ़ा है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी से खास बात की हमारे सहयोगी यतिन होता ने आपसे। इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आपने दी है, चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ हो, डिपॉजिट फ्रंट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा क्योंकि PSU क्षेत्र में सबसे बड़ा QIP सक्सेसफुली आपने क्लोज कर दिया। तो इस एनवायरनमेंट में जहाँ कॉस्ट ऑफ फंड्स को भी मैनेज करना है, आपको इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन भी मेंटेन करने हैं और कॉर्पोरेट साइड पे जो लोन पिकअप की आप बात कर रहे हैं वहाँ भी ध्यान देना है। तो ओवरऑल आने वाले क्वार्टर्स में जैसे ही फेस्टिव सीजन शुरू होगी, मैक्रो पिकअप होगा, शायद RBI का रेट कट भी हो जाए, तो इस पूरे एनवायरनमेंट में कैसे देखते हैं आप आपके मार्जिन्स और ओवरऑल कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ को? अब तो QI के बाद आपने मेंशन किया तो वो उसके बारे में एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ। देश में सबसे बड़ा इक्विटी रेजिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है एंड इसमें लगभग 60% से ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स का है। वो कॉन्फिडेंस दिखाता है बोथ SBI में और देश की इकॉनमी में। वो बोलना चाहता हूँ मैं। ये कैपिटल ऑल्सो हमको ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का क्रेडिट एडिशनली देने का कैपेसिटी भी दिया है। ये डिमांड की बात है तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिटेल इज़ डूइंग वेल। हाउसिंग लोन का ग्रोथ बहुत रोबस्ट है, 15% ग्रोथ रेट देखा हमने। ये क्वार्टर में भी हम सोर्सिंग ऑफ एप्लीकेशन और सैंक्शंस होम लोन में बहुत अच्छा है। SME लीडिंग ग्रोथ रेट की इंडस्ट्री एज वेल एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा कर रहा है। कॉर्पोरेट का थोड़ा माइल्ड ग्रोथ रेट रहा इस बार बिकॉज मार्केट कमर्शियल पेपर वगैरह इंस्ट्रूमेंट
बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स में मिल रहा है, सो दो सम ऑफ द कॉर्पोरेट्स वर्किंग कैपिटल लेवल में थोड़ा कम कर दिया है। पर मेरे ख्याल से हमारा जो पाइपलाइन देखें तो लगभग 7 लाख करोड़ का पाइपलाइन है, सैंक्शन बट नॉट डिसबर्स्ड, एंड जो भी प्रपोजल्स डिस्कशन में है, ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हम कॉर्पोरेट क्रेडिट भी डबल डिजिट में आ जाएंगे। सो हमारा गाइडेंस जो 12% का क्रेडिट ग्रोथ दिए थे हम, वी आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सबसे पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, आपकी जितनी साइज़ की बैंक में आपने बहुत अच्छी तरीके से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स मेंटेन किए हैं। क्या फुल ईयर में जो आप गाइड कर रहे हैं 3% के आसपास आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स रहेंगे, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि सेकंड हाफ में अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है वहाँ? नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, निम का ट्रैजेक्टरी यू शेप होगा। Q1 में थोड़ा कम हो गया, Q2 में और इम्पैक्ट हो सकता है, बट Q3 एंड Q4 इम्प्रूवमेंट विल बी देयर फॉर 2 रीजन। वन इज एक हमारा CRR का जो बेनिफिट मिलने वाला है, लगभग 50,000 करोड़ का जो CRR में जा रहा था, जो जिनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है, नहीं मिलता है, वो तो हम डिप्लॉय कर सकते हैं, उसका थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ये फिक्स डिपॉजिट्स है, काफ़ी सारे फिक्स डिपॉजिट भी प्राइस हो जाएंगे। तो इस दोनों को मिला के मेरे ख्याल से 3% से ऊपर ही हमारा निम होना चाहिए एग्जिट में Q4 तक। सर एक आखिरी सवाल, 25,000 करोड़ आपने QIP से रेज किया, वो पैसा आपकी बैलेंस शीट पे आ गया, शायद येस बैंक का ट्रांजैक्शन भी बहुत जल्द कंक्लूड हो जाएगा, तो वो भी एक एडिशनल लिक्विडिटी रहेगी। सवाल ऐसा है कि कब तक येस बैंक का ट्रांजैक्शन आप कंक्लूड करेंगे, और रिमाइंडर जो स्टेक है वो भी क्या इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब सफिशिएंट लिक्विडिटी और लेवरेज आपको मिल सकता है उस वजह से? ये 25,000 करोड़ का कैपिटल लेके हम एडिशनली अनदर 2.5 लाख करोड़ वी कैन सपोर्ट। So definitely it has given the power to support the credit growth rate. So येस बैंक का जो भी है, हमने डील साइन किया है, नॉन बाइंडिंग ऑफर दिया है, उन्होंने साइन किया है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल वेट कर। तो वो 1-2 क्वार्टर में आपको लगता है कंक्लूड हो जाएगी ट्रांजैक्शन? इस साल होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये पूरी बातचीत सुनी आपने SBI के चेयरमैन के साथ, और SBI का स्टॉक अगर आप देखते तो 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ डेज हाई पर 821 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हम देखते रहिए CNBC आवाज़। Moria Steel presents Majboot Stocks of the Day. अगर आपका व्यू माय बर्थडे गिफ्ट टू पापा, ये उनके पापा की पहली गाड़ी एक गैराज में पड़ी थी दार्जिलिंग में, फिर 3 मैकेनिक, पेंटिंग, पॉलिशिंग, जब इसे फाइनली घर लाया ना, तब लगा लाइफ में ग्रो किया। SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। साल से CNBC आवाज भारत की फाइनेंशियल मार्केट की पल पल की हलचल पर नजर बनाए हुए है, वो भी रियल टाइम। मार्केट्स, कारोबार और निवेश से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी लाता है। हमारी एक्सपर्ट राय आपको सही फैसला लेने में हेल्प करती है। यहाँ है भारत की फाइनेंशियल मार्केट की सबसे भरोसेमंद आवाज। हमसे जुड़े हर दिन लाइव नुवामा प्रेजेंट CNBC आवाज मार्केट से, जहाँ वेल्थ क्रिएशन की होती है शुरू, सही करने की सोच। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की।
the taste of success. पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। वेलकम बैक। चलिए अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और फटाफट से मुनाफा का मीटर आपके लेकर आते हैं स्क्रीन पर। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और किसने लीड ले लिया है? तो अमित त्रिवेदी जी ने लीड ले लिया। इनका पोर्टफोलियो आधा फीसदी से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है फिलहाल। और हरीश जी का पोर्टफोलियो, आशीष जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में है, आधा फीसदी करीब नेगेटिव रिटर्न हरीश जी के पोर्टफोलियो से आता हुआ और 0.17% के करीब आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्र में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज। और फिलहाल वक्त हो चुका है वाइंड अप करने का। आपसे मुलाकात होगी कमाई का दम में। आप देखते रहिए सीबीसी आवाज़। कुछ लोग लोकल फ्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैंड देखकर धोखा खा रहे हैं। और ये है सैनिक 710। लोकल फ्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ फ्लाई है। तो धोखा मत खाइए। सैनिक 710 with your life। सैनिक 710 सिर्फ 140 रुपीज for you. Networking TV और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। So the market is kind of slowly creeping up. I think because of too much of oversold territory, the market is gone. Many of the shares are below short-term averages, and usually what is called mean deviation. If on short-term averages, if the prices of many of the shares go below, the mean will pull it up, so it will again go back to the average and go cross it and then go fall. So that has to take place. So for that there should be some kind of a pullback. I think what one can expect at this point of time is it can try to touch somewhere 24,520 or 30, even 50, because currently the 24,500 call is around 109 rupees. So unless and until it crosses 24,600, these call writer will be sitting very happily, because they have all written it on Friday at a huge value. If you see the Friday closing price is what almost 100, and Friday high should be 100 and 1 second. Let me check properly. Bye.
Today Zerodha is not. Zerodha seems to have some issues. So even if you 8th, it started off with somewhere around 210 rupees. Okay, and there have been good amount of selling must have taken place on 8th. So, and there is a heavy volume sales at 1 second. Today Zerodha is cranky, I don't know. The charts are moving very funnily. Maybe they have overloaded. 140 there is a good volume. So unless if the 107 rupees crosses 140, there will be some amount of short covering will take place for those who have sold. Not short covering, actually they will buy those who have sold the calls at 140. I think that is where is the peak. So if you keep watching at the 24,500 CE, which is at 105, once it crosses 140, then it will zoom. That is how it is. Yes. So let's see. So that is a market is trying to creep. There has been no major negative. Previous days we saw at the beginning of the day itself there used to be huge candles like this, which is red candles, meaning heavy amount of selling. That has not taken place today. In fact, we had a positive opening with positive volume, and even now all our 5 indicators are in green, and there is a positive volume also. So let's see how far this rally will be taken to. One can kind of keep looking at this 24,400 CE at 148 to 152. It will keep coming to that zone and then again bounce back. That is what will keep happening. So you can keep buying it at around 148 with 139 as the stop loss, and it should keep bouncing back to 170, 177 now and then. Again, as we speak, it has already come, touched 147 and then again recovered above 150, because that is the pivot CPR for that particular option price. And also if you see very similarly to our Nifty also, it will always try to come to 24,428, that is the CPR, and then it will bounce from there. If it opens a candle below this, then again this entire rally is gone. Then the support will come only at 24,386. See, one bar the Nifty has come down from, as we are speaking, from 24,467 to 24,420, around 40 points. This is what is called the stop loss candles. So what you will see during this time, there will be a lot of volumes in calls, because those people who have written yesterday around 140, 142, etc. Now they are seeing this around 100 rupees.
They will try to book profits. Ah.
54. Okay, okay, okay. $54 ಅಂತ దీన్ని ఎత్తుకి దీంట్లో వేసి దాన్ని ఎత్తుకి దీంట్లో వేసేస్తే వాట్ ఇస్ దిస్ డూయింగ్?
चार्ट చూస్తున్నాం बच्चा बच्चा దీనంతా ఎందుకు అమ్ముతావు ఇద్యా
के निकलने। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हूं। दिन के ठीक मध्य में सुबह हमने क्या अप्रोच ली थी, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में, और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस और कुछ थोड़ा रिसर्च बेस्ड अगर आप देखें विषयों पर बातचीत करेंगे। फॉर इंस्टेंस टाटा मोटर्स एक बहुत ही एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, बहुत बिकने के बाद आज एक रिजल्ट्स के बाद रिएक्शन है। हालांकि नंबर्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे, याद रखिएगा, बट ये है क्या समझेंगे। आशीष बहती इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होंगे बतौर मेहमान आज के। उन्हीं का आकलन प्रस्तुत करेंगे हम आपको निफ्टी बैंक पे और स्टॉक्स पे। एक बार इंडेक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 24423 निफ्टी, और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा लगभग 55,162 की रेंज में। आज सुबह से क्या हुआ, हमने क्या कैरी फॉरवर्ड किया था। हमने कैरी फॉरवर्ड की थी एक्सट्रीम वीकनेस, एफआईएस के बहुत ही नेगेटिव आंकड़े, 1,83,000 शॉर्ट कॉल्स में शॉर्ट, और हेवीली 1,70,000 कॉल शॉर्ट गए थे वो शुक्रवार को न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए आज सुबह खुलते साथ हमने क्या डिफेंड किया। हमने शुक्रवार के लो को डिफेंड किया, हमने गुरुवार के लो को डिफेंड किया, हमने लास्ट वीक के लो को डिफेंड किया, और हमने एक पुल बैक जनरेट करने की कोशिश करी फ्रॉम आई थिंक 24363। लेकिन जो हमारा आई थिंक लास्ट सेशन का डेटा था उसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या था। मैंने आपको एक बिल्कुल बात आज भी नहीं पिछले 4 हफ्ते से कह रहा हूं, शॉर्ट करने की एक ट्रैजेक्टरी होती है, एक जोन होता है, दैट्स सेल एंड राइज। आपका रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ये लाजमी था कि बाजार ने जब कल के यानी शुक्रवार के या फिर लास्ट वीक के लो को जब सिक्योर किया तो एक पुल बैक देगा, बट क्लियरली अंडर द इंप्रेशन ऑफ कॉल राइटिंग और शॉर्ट, एक व्यू मैंने जो लिया था सुबह सुबह कि मैं ज्यादा इच्छुक हूंगा क्लोजर टू RS1 और बिटवीन RS1 एक सेल ट्रेड लेने में। लेके आइए स्क्रीन पर जरा 463,542 इस जोन में जब आएगा मैं एक सेल ट्रेड लूंगा। और अभी कुछ देर पहले उस सेल पे अगर आप देखें एक अच्छा स्विंग मिला। वो ट्रेड या फिर वो जोन क्यों पिक किया गया है, फिर कह रहा हूं 1,70,000 कॉल शॉर्ट, और वो शॉर्टिंग शुरू हुई थी 24,500 600 की स्ट्राइक पे। 2 स्ट्राइक्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी। देखिए जब आपने 2 चीजों को 3 चीजों को रिस्पेक्ट दी, यहां पे आपने कॉल राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट दी, आप सिंक हो गए। आपने सुबह लास्ट वीक के लो को रिस्पेक्ट दी, आपने पुल बैक जनरेट किया। सो फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन, इस सेशन के दूसरे हाफ के लिए आपके एजेस, आपके लेवल्स, आपके जोन्स बिल्कुल अगर आप देखें डिस्क्राइब्ड हैं और डिफाइंड हैं। लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज जरा। वो है आज का लो और वो है आज का RS1। स्टैट्स लेके आइए। 24,500 की कॉल में क्या हो रहा है इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में शुक्रवार का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन वो सरेंडर हो रहा है क्या? नो, नॉट एग्जैक्टली। 46 लाख कॉल वहां पे आज फिर भी की है। यानी आप ये मान के चलिए कि मैं अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि जब हम RS1 के आसपास जाएंगे इट्स अ सेल, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज 24,400 पे पुट राइटिंग हुई है और बहुत डिसाइसिव पुट राइटिंग हुई है, आपको आज के लो को, शुक्रवार के लो को आप रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। द ट्रेड जोन परसिस्ट बिटवीन टुडेज लो, फ्राइडेज लो और RS1 के बीच में। सिंपली बात यह है। और शॉर्ट कवरिंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए हमें RS1 को काटना बहुत जरूरी होगा। याद रखिएगा RS1 के आसपास ही आपका सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन परसिस्ट करता है। तो मैं किसी भी प्रकार के अगर रिवर्सल खेलने को इच्छुक हूंगा तो वो तभी होगा जब आप इस 24,550 के जोन, 542 के जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। टिल द टाइम RS1 सप्लाई जोन, शॉर्ट का जोन, और नीचे शुक्रवार का लो, आज का लो, कवर का जोन। बट एक बात याद रखिएगा, अगर हम तोड़ते हैं आज का लो तो 200 डेमा इज डेफिनेटली कॉलिंग अस, जो कि प्लेस्ड है 24,200 पे। और देखिए ये बात मैंने आखिरी में क्यों जोड़ दी, उसके पीछे एक कारण है निफ्टी बैंक। लुक एट निफ्टी बैंक। क्लियरली एक बात सुबह सुबह आपको बताई गई थी, मैंने जो आंकलन प्रस्तुत किया था उसमें निफ्टी बैंक अभी 55,000 को सिक्योर करके चल रहा है। शुक्रवार के लो को तोड़ा नहीं। क्या बात हुई थी सुबह? लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। जब ये RS1 की ट्रैजेक्टरी के आसपास आए, बेटर शॉर्ट ट्रेड विल वर्क फॉर यू। क्या है RS1? 55,500 का कॉल राइटर जोन।
प्लस फॉलिंग 10 डेमा का जोन 477 अगर आप देखें मैंने पॉइंट मेंशन किया था और 350 पे जाकर सिंक हो गया। पर एक बात याद रखिएगा, अगर ये जोन कटता है तो सेकंड जोन डेफिनेटली मिलेगा RS2। वो क्या है? वो आपका 50 डेमा का जोन है। वो क्या है? बड़े कॉलेटर्स का जोन है। लेकिन अगर आप RS1 के नीचे सेल कर रहे हैं तो याद रखिएगा एज ऑफ नाउ कैलकुलेटेड रिस्क लेना है शॉर्ट पे। क्यों? लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पे। बेस 1 क्या है? बेस 1 है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई जहां पे कहीं प्लेस है वो यही है। तो हमारा ट्रेड आज दोनों ही इंडस्ट्रीज पे डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है। आशीष भाईती जी से बात करते हैं अब आज के सेटअप पे। आशीष, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से आज इंडेक्स ने एक पोल बैक दिया, लेकिन वही कॉलाइटिस के जोन में जाके फिर सिंक हो रहा है। आपकी इंडेक्स पे अप्रोच क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। वीरेन जी 6 हफ्तों की गिरावट के बाद निफ्टी जो है वीकली चार्ट्स पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके पास में आ चुका है। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अगर आप डेली चार्ट्स भी देखेंगे तो काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड हो चुका है। जो 20 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 24,850 के कहीं पास में है और अभी हम ऑलरेडी वहाँ से 400 पॉइंट दूर है। तो हमें लग रहा है कि अब निफ्टी इन लेवल्स पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, एक सपोर्ट जोन जरूर है। तो यहाँ पे अब फ्रेश गिरावट हमें नहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने भी बताया कि सेल ऑन राइज का मार्केट अभी भी इंटैक्ट है और जो सेलिंग जोन है वो 24,550 के आसपास में ही है। अगर वहाँ पे आता है मार्केट तो वापस एक शॉर्ट अटेम्प्ट लिया जा सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस 24,600 के करीब का रखना है। नीचे में हमें लग रहा है जो मार्केट ने एक सपोर्ट फिगर आउट कर रहा है अभी मार्केट, वो 24,370 के करीब का जो जोन है वहाँ पे मार्केट अब एक सपोर्ट स्टैब्लिश कर रहा है। तो इसी जोन के अंदर ट्रेड करना है और इसके ब्रेकआउट पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखे दोनों साइड में। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे हल्का सा एक PSU बैंकों का सपोर्ट आज देखने मिला है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे भी काफी खराब है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें काफी प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पे भी सेल ऑन राइज का ही स्ट्रक्चर बना है। जो सेलिंग का जोन बन रहा है वो 55,400 के आसपास में सेल करना है और जो 55,500 के करीब का एक एसएल रखना है। नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है जो कि 54,900 का है। तो वहां पे अगर आए तो फिर प्रॉफिट बुक भी करना है उसमें। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका व्यू। अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पर। आशीष, 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, थोड़ा सा अभी भी शॉर्ट की तरफ ही जाना चाहेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी भी काफी काउंटर्स है जिनमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फ्रेश शॉर्ट्स हो रहे हैं। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो टीटागढ़ का रहेगा। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिला है और जिस हिसाब से इसमें हर टिक पे सेलिंग बढ़ रही है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है। तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 795 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 770 और 750 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें खराब लग रहा है वो ब्लू स्टार का। यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि ये सेक्टर में काफी प्रेशर बना हुआ और जिस हिसाब से ब्लू स्टार 20 डेमा के नीचे निकल गया, स्लिप हो गया। आज लास्ट हफ्ते एक अच्छा पुल बैक देखने मिला था बट वो पूरा गेन अब ऑलमोस्ट गिव अप करता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1800 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 1720 और 1690 दो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। वीरेन जी, तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है ग्रासिम का। यहाँ नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन देखने मिला। स्टॉक आज जरूर थोड़ा सा इंट्राडे हाई से कूल ऑफ हुआ है लेकिन 20 डेमा के आसपास में ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और जो पिछले हफ्ते की गिरावट थी वो थोड़ी सी अरेस्ट होते हुए देखने मिल रही है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो खरीदारी की जा सकती है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2690 2690 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2790 और 2850 ऐसे दो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, निफ्टी पे बात होगी, निफ्टी बैंक पे बात होगी। 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके स्क्रीन पे। ग्रासिम बाय कॉल है 2748 पे। आपका एक एक करके ट्रेड सारे के सारे स्क्रीन पे रखते हैं विद स्टॉप लॉस आगे सीट अगर रेल सिस्टम सेल पे 770-750 का लक्ष्य यहाँ पे, 795 का स्टॉप लॉस, 776 पे ट्रेड करता हुआ। अगला ट्रेड आएगा आपकी स्क्रीन पे आशीष भाई का ब्लू स्टार वाइट गुड सेगमेंट पे पेन है 1720 1690 का लक्ष्य, 1800 का स्टॉप लॉस। और अभी अभी जो ग्रासिम पिक किया वो था लॉन्ग साइड पे फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 2790 2850 2690 का स्टॉप लॉस। एक बात फिर कह रहा हूं, प्लीज निफ्टी लेके आइएगा। इंट्राडे में पुट राइटिंग है 24,400 पे, यानी वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। राइटिंग है 24,500 पे, लेकिन कन्विक्शन टू बाय फॉर ए शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट वो 554 के ऊपर ही आएगा। पर एक बात याद रखिएगा, पिछले 20 दिन में ये बाजार की टेंडेंसी रही कि बाजार सेकेंड हाफ में ब्रीच करता है पुट राइटर्स के जोन को। ये लास्ट टाइम भी हुआ था। वो जो 480 टूटा था ना
अगर लास्ट वीक वो ऐसे ही था। सो सेकेंड हाफ के लिए थोड़ा सा कोशिश रहिएगा। अगर पुट राइटर्स का जोन टूटता है 400, 390, 380, तो शायद हम मॉर्निंग लोज को विजिट करें, ठीक है। तो उस चीज़ को सेकेंड हाफ के लिए ध्यान रखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आशीष से अभी बात कर रहे थे, फिर आशीष से बात करेंगे। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे आएगा। नंबर्स सुबह अगर आप देखें प्राइमर फेस वीक लग रहे थे, लेकिन बाजार ने इसमें भी कुछ अच्छा खोजा। इन नंबर्स में भी उन बारीकियों को बात करेंगे। और टाटा मोटर्स जो कि इस दौर का सबसे वीक स्ट्रक्चर था ऑटो स्पेस में, आई थिंक ऊपरी तरफ से लगभग आधा हो चुका था। प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव थी। क्या कारण रहा कि ये आज चला? बाजार ने क्या इसमें अच्छा खोजा? बातचीत करेंगे आशीष से छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैंप देखकर धोखा खा जा रहे हैं। और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं, और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है। तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाई। सैनिक 710 सिर्फ 114 रुपीज पर यूनिट। Corrector, the taste of success. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जरा प्लीज़ एक बार टाटा मोटर्स का लॉन्गर टर्म चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रेक से बाद हम जब लौट के आएंगे तो बात करेंगे टाटा मोटर्स पे और इसके इस पुल बैक का बड़ा कारण क्या है। 649 इट्स 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ और कितनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस। और सुबह हम जब नतीजों का आकलन कर रहे थे, जेआरआर के बिटा मार्जिन्स की बात की गई थी, जहाँ पे एक सब्सटेंशियल ड्रॉप था मेरे ख्याल से 485 बेसिस पॉइंट का। बाकी नंबर्स भी थे जिसकी विवेचना सुबह हमने की थी। बट लॉजिकली मार्केट ने क्या रीड किया इस नंबर्स के बीच में? आशीष से बात करते हैं। आशीष, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक, हालांकि ओवरसोल्ड था, काफ़ी सब्सटेंशियल शॉर्ट थे यहाँ पर, बट बाजार ने इन नंबर्स में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश की क्या? वो पॉइंट्स क्या थे? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि नंबर्स अगर आप देखें तो ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगेंगे और एक्सपेक्टेड था कि आज इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, लेकिन इसके विपरीत बाजार ने अगर आप देखें तो पॉजिटिव्स पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर समझा और इसी के चलते स्टॉक में तेज़ी आई है। अब जैसे कि आप बता रहे थे कि जेएलआर के जो एबिट मार्जिन्स हैं
यहाँ पर अगर आप देखें तो जो गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये जो मार्जिन्स आए ये अनुमान से स्लाइटली बेहतर देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्वार्टर वन है ये वीकेस्ट क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन इसके बाद भी गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं है। इसको मार्केट ने आप देखें तो बहुत पॉजिटिवली लिया है, 5 से लेकर 7% की, और ये भी इंक्लूड कर रही है इम्पैक्ट ऑफ रिवाइज टैरिफ। इसके बाद भी 5 से लेकर 7% की एबिट मार्जिन ग्रोथ गाइडेंस जो है इसको बरकरार रखा गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्वार्टर वन काफी कमजोर रहा है अब तक, लेकिन क्वार्टर टू के बाद से एक ग्रेजुअल रिकवरी जो है, क्योंकि जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है बताया जा रहा है कि खत्म हो जाएगी, उसके चलते काफी अनिश्चितता दूर होने से अब यहाँ से थोड़ा सा जो माहौल है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीवी सेगमेंट काफी बेहतर कर ही रहा है, लेकिन सीवी सेगमेंट में जो इनका मार्केट शेयर है एक सीक्वेंशियल तौर पर थोड़ा सा बेहतर हुआ है। ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट की जो मार्केट शेयर में बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और 36.1% का सीवी में इनका टोटल मार्केट शेयर देखने को मिला। एक और अच्छी बात जो मार्केट को बहुत ज्यादा पसंद आई है वो ये है कि अगर आप इनका ईवी सेगमेंट देखें तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पर ग्रोथ आगे भी बहुत बढ़िया देखने को मिल सकती है। अभी जो टोटल ईवी मिक्स का कंट्रीब्यूशन है ये ऑलमोस्ट फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 13% के आसपास है, लेकिन अगली तिमाही से अगर आप देखें तो ये 13% से बढ़कर 17% हो जाएगा। 4% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इसको मार्केट ने बहुत एनकरेजिंग तरीके से लिया है। और एक और खास बात है कि स्टॉक अगर आप देखें तो नतीजों से पहले सिग्निफिकेंटली नीचे करेक्टेड है। पिछले 8 महीनों में यानी साल की शुरुआत से लेके अब तक तकरीबन 14% और एक साल में 40% की गिरावट देखने को मिली। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि जो कमजोर नतीजे थे कहीं ना कहीं प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थे, और इसी के चलते अगर आप देखें तो नतीजे कमजोर होने के बाद भी स्टॉक 2.5% ऊपर है। जय आशीष, शुक्रिया सारे अगर आप देखें पहलुओं को समझाने के लिए। जैसे कि आशीष ने कहा कि देखिए स्टॉक अगर अंडर परफॉर्म कर रहा था पूरे ऑटो को भी, इस दौर में हमने एमएलएम को ऑल टाइम हाई लाते हुए देखा। मारुति ठीक था, कोलैप्स नहीं हुआ था, बट स्टेबल था एक रेंज में, और अशोक लेन में हमने अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस देखी। एक टाटा मोटर्स बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें जिसमें कहते हैं शॉर्टिंग खड़ी हुई थी, उसने आज इन नंबर्स के बाद एक पुल बैक दिया। इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से आज एक पुल बैक आया। पर आशीष लॉजिकली अगर आपने एक रिवर्सल खेला यहाँ पर, आशीष के पास चलते हैं, बहती जी के पास, लॉजिकली एज अ ट्रेडर कब इस रिवर्सल ट्रेड में से निकल के आ जाना चाहिए, आपकी राय क्या कहती है? और या फिर अभी चांसेस हैं इस रिवर्सल को और खेलने के? जी वीरेन जी, इनफैक्ट चांसेस है, और अगर हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी ये इनगल्फ कर रहा है, कल फ्राइडे की जो गिरावट थी उसे हमें लग रहा है शायद यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, जो कि 670 तक का जोन दिखा सकती है, जो कि 20 डे मैथ मतलब 20 रुपीज का मूव देखने मिल सकता है। इनफैक्ट अगर आज फ्रेश लॉन्ग भी इसमें करना है तो एक BTST की तरह ट्रेड लिया जा सकता है। अगर ये डे एंड तक सस्टेन करता है 650 के ऊपर, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 640 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर 670 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है टाटा मोटर्स पे व्यू। 651 प्राइस डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होता है। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से। आपका इंडेक्स उसी रेंज में है, अभी उससे बाहर आने की तैयारी नहीं कर रहा है, वही 390-400 को रिस्पेक्ट दे रहा है और मॉर्निंग हाइस को अभी उससे डिस्टेंस ही मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन आते हैं अब आज के ऑप्शन रेट की तरफ। आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? जी वीरेंद्र जी, कॉनकॉर में काफ़ी अच्छी गिरावट है और मुझे लग रहा है इसे पुट के थ्रू ट्रेड करना चाहिए। तो 540 की जो पुट है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 8.5 के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें जो पोजीशन बनाना है वो उसमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 6 रुपये का एसएल रखे। ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो 13 रुपये और 16 रुपये तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, कॉनकॉर 880 पर इसकी 540 की पुट ट्रेड करते हुए वीक स्ट्रक्चर है यहाँ पर और आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सिग्निफिकेंट ओआई बिल्डअप बेसिस स्ट्राइक पे हुआ है। पुट ऑप्शन 540 की कॉनकॉर की आपको पिक करनी है। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखने के लिए। इंडेक्स लेके आइए एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी याद रखिएगा सेकेंड हाफ अमूमन हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल रहा है। शॉर्ट कवरिंग के लिए 540, 543 का जोन काटना जरूरी है। इंट्राडे में इट सीम्स बाजार एक रेंज मेंटेन करेगा 390, 410 ऑन द डाउन साइड और ऊपर की तरफ RS1 का ख्याल रखिएगा। बट इन एनी केस अगर 390, 380 वायलेट होता है तो एक ड्रिफ्ट, एक स्लिप टुवर्ड्स मॉर्निंग लोस और फर्दर टुवर्ड्स 200 मार्क पॉसिबल है। बैंक निफ्टी उतना डिसाइसिव पुल बैक जनरेट नहीं कर पाया है। आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई करने में, तब तक के लिए नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Investment. पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। Character, the taste of success.
हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स। मदद करने के लिए आज होंगी आपको, आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी निर्मल बंग से स्वाति होतकर। स्वाति हाय गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ। नीचे अपडेट्स चल रहे हैं, आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट्स। आज सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टॉक अपन सुबह डिस्कस कर रहे थे वो था आईसीआईसीआई बैंक। वो मिनिमम अकाउंट बैलेंस का जो अपडेट आया उसी पर नीचे गवर्नर साहब के स्टेटमेंट्स हैं कि आरबीआई ने ये फैसला जो है ना वो बैंकों पे छोड़ रखा है, वो कितना चाहते हैं मिनिमम अकाउंट बैलेंस। इसमें उनका कोई हस्तक्षेप रेगुलेटर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे तो 50,000 रुपये करें, वो देखिए मिनिमम बैलेंस तय करने का फैसला बैंक ही करेंगे। तो इसमें हाँ, इसमें रेगुलेटरी हर्डल तो नहीं था, ये तो पहले से पता था, कंफर्मेशन आता हो आरबीआई गवर्नर की तरफ से भी। पर मार्केट्स ने कैसा लिया उस डेवलपमेंट को? वीक है आईसीआईसीआई, 1% के आसपास का दबाव है। आईसीसी ने क्या करा था दरअसल, जो शहरों में मिनिमम अकाउंट बैलेंस था 10,000 रुपये, उसे बढ़ा के उन्होंने कहा वो थ्रेशोल्ड होगा 50,000 रुपये। उसके नीचे रखेंगे तो पीनल एक्शन, पेनल्टी लगेगी आप पे। खैर, अब इसका मतलब है कि बिजनेस एकदम से मास से क्लास की तरफ ले जाने की तैयारी हो रही है। वो रीजिक थोड़ा सा तो इम्पैक्ट करेगा धंधे पे, इसीलिए शायद आईसीआईसीआई बैंक इस तरह की नरमी, इस तरह की सुस्ती के साथ कामकाज करता हुआ। पर इस पे स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है कि दरअसल ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए मूव कैसा रहेगा। एक तो ऑलरेडी अकाउंट जिनके खुले हुए हैं उन पे ये लागू नहीं होना है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आज सुबह चर्चा हो रही थी आईसीआईसीआई बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी अकाउंट्स। सबसे पहले और सबसे बड़ा मार्केट इसके लिए वो बन गया था। सैलरी अकाउंट्स इस प्रोविजनिंग, इस नए प्रावधान से अछूते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब जो मीनिंगफुल अकाउंट्स हैं वो तो इस दायरे से बाहर ही हैं, ये ध्यान रखिए। पर हाँ, रीजिक हो रहा है धंधे का, इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा सर क्या कह रहे हैं इस मामले पे, आइए सुनवाई देता हूं आपको यहीं पे। जिस तरह से आपने अभी आईसीआईसीआई, आपने अभी ग्रामीण भारत को बैंक से जोड़ने की बात करी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने जो मिनिमम बैलेंस रखने की बात की है, क्या आप उसको पुनर्विचार करने के लिए बोलेंगे? देखो, ये जो मिनिमम बैलेंस की जो बात है, जो मिनिमम बैलेंस का जो आप बात कर रहे हो, वो उसके अंदर में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के ऊपर में छोड़ा है कि वो किस प्रकार का मिनिमम बैलेंस वो रखना चाहते हैं। तो अब किसी बैंक ने 10,000 रखा है, किसी ने 2,000, कईयों ने माफ़ भी किया हुआ है, लेकिन ये रेगुलेटरी डोमेन में नहीं है। रेगुलेटरी कोई हर्डल नहीं है, रेगुलेटरी डोमेन के बाहर की बात है। बैंक को अपना ही डिसाइड करना है वो क्या थ्रेशोल्ड रखना चाहता है। आईसीआईसीआई बैंक ने निर्णय लिया है वो 50,000 रुपये अर्बन एरियाज के लिए, सेमी अर्बन और रूरल के लिए 25,000 हो जाएगा। ये तो केतन की आवाज़ थी, हमारे अहमदाबाद के संवाददाता वही पूछ रहे थे मेरे ख्याल से गवर्नर साहब से ये सवाल। बढ़िया है केतन, बहुत बढ़िया, एकदम टाइम पे आप लेकर आए रेगुलेटर का अपडेट। खैर, आईसीआईसीआई बैंक वीक, ऐसे ही मार्केट्स लेकर आई। मार्केट बुरे नहीं है, लेकिन ऐसा कोई दमखम नहीं है। बहुत दिनों की दबाव से, 6 हफ्ते की पिटाई से आज जब नए हफ्ते की शुरुआत हुई तो थोड़ी लड़खड़ाती हुई, सुस्त शुरुआत हुई थी। बिल्कुल फ्लैट था निफ्टी, लड़खड़ाया शुरुआत में, लेकिन अब डिसाइसिवली मूव कर रहा है। लेकिन हाँ, वो वही सुबह के हाईज के आसपास ही, ऐसा कोई ब्रीच नहीं कर दिया, ऐसा कोई इवन और रेजिस्टेंस के थ्रेशोल्ड को टच करने नहीं गए हम लोग। लेकिन 1/4 1/3% मजबूती के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ब्रेथ इवन स्टीवन है, 1:1 का रेशियो। जितने गिर रहे हैं उतने ही उछल रहे हैं स्टॉक्स। तो कोई डिसाइसिव मूव नहीं आया है। लार्जली फ्राइडे के पेन के बाद कह लीजिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ। स्वाति, आप कैसे रीड करोगे? और निर्मल बंक पे आप लोग का निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है? ये दिक्कतें क्या बढ़ने वाली हैं? आप लोग एक्सपेक्ट करो तगड़ा डाउनसाइड खुलेगा या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, निफ्टी के व्यू के बारे में अगर लंबा नजरिया हमारे 1 से 2 क्वार्टर्स का नजरिया रखते तो हमारा व्यू बुलिश है, क्योंकि हम लोग ने इवन निफ्टी पे रिपोर्ट्स जनरेट किया था जहां पे हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि 24,400 टू 24,200 वहां तक डेप्थ हम देख रहे थे निफ्टी में। और ये बाइंग जोन है 24,200 24,400 के लेवल्स, वहां से हमें एक अच्छी खासी बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है, विच माइट टेक निफ्टी टुवर्ड्स टू 25,000 25,400 वहां तक
और वापस हमें निफ्टी में रैली होते हुए लगा। ये शॉर्ट टर्म फॉल था मुझे लगता है, बट अगर जब भी निफ्टी 24,200 24,000 के रेंज में आती है तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बनती है। जिस हिसाब से आज का मोमेंटम है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि कोई डिसिसिव मूव नहीं है, निफ्टी हॉवरिंग कर रही है 100 डे मूविंग एवरेज, बट हमें ब्रेकआउट चाहिए जो कि है 24,540 के आसपास का है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग रखती है तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस आएगा या फिर सेंटिमेंट्स थोड़े बहुत चेंज होंगे। अभी तो फिलहाल टेक्निकली भी बात करो तो कोई मेजर हमें रिवर्सल साइंस नहीं देखने मिल रहे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट लंबे नजरिए के लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। नीचे में 24,200 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेवल है, वो जब तक बरकरार है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। एंड मुझे लगता है कि यस 25,000 के लेवल्स हमें वापस देखने मिल सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। मार्केट अपने पेशेंस टेस्ट कर रही है, बट कोई डरने की बात नहीं है। क्वालिटी काउंटर्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, यही राय हम फिलहाल निर्मल बंग से दे रहे हैं। 25,000, चलो कोई तो रिस्पाइट वाली किसी ने तो बात करी, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, समय लगेगा, टाइम वाइज कंसोलिडेट कर रहे होंगे, लेकिन इवेंचुअली अब ज्यादा पेन बचा नहीं मार्केट में, ऐसा कहूं ना? करेक्ट। अरे वाह, साथी आपके मुंह में आप समझ लो, बढ़िया है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज मुंबई, अहमदाबाद, सिंगापुर और भिलवाड़ा जाना है, पर भिलवाड़ा का लिंक अब तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, हो गया अगले 10 मिनट में तो बातचीत, अदरवाइज छोड़ देंगे। सबसे पहले सिंगापुर से मीरा खोसला मैम जुड़ती हुई। मीरा मैम सिंगापुर कैसे पहुंच गए? सिंगापुर में मेरा बेटा रहता है जी। तो आप भी वहीं रहते हो या आते जाते रहते हो? नहीं, मैं आती जाती रहती हूँ जी। मजा आता है वहां पे? बहुत अच्छा लगता है जी। क्यों? अच्छा है जी, अच्छा कंट्री है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो अपने भी है, ऐसा क्या? बहुत अच्छा है जी। ये किसके लिए कहा, सिंगापुर के लिए कि अपने हिंदुस्तान के लिए? जी ये दूसरी बार बहुत अच्छा आपने किसके लिए कहा, सिंगापुर के लिए कि हिंदुस्तान के लिए? मैं कह रहा हूं अपने भी लॉ ऑर्डर बढ़िया है। नहीं, अपने इंडिया में इतनी सेफ्टी नहीं है जी। जहाँ सुबह 4 बजे समुद्र पर चले जाते हैं बीच पर वॉक करने के लिए, कोई गोल्ड पहनना, कोई डर नहीं है। इंडिया में तो छीना झपटी बहुत है जी। ऐसा मत बोलो, आप बैठे बैठे हमको डरा रहे हो, हम तो इंडिया में, आप तो सिंगापुर में बैठे हो। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत इफ्स एंड बट्स चलते हैं। कब वापस आ रहे हो मीरा मैम? मेरी नेक्स्ट वीक वापसी है जी। अब मीरा मैम पहला सवाल कौन सा स्वाति के लिए? पहला सवाल सर, मैं वीआईपी इंडस्ट्री में बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, अब क्या करूँ उसका, वो तो आज भी गिरा है। पहले मैंने सोचा था एवरेज करूँ, फिर मैंने कहा नहीं। वीआईपी पूरी तरह फंसे तो हो गए आप, लेकिन वीआईपी में बड़ा गेम बदल गया है, वो प्रमोटर चेंज हो गए, पी प्लेयर आ गया, काफी होप जाग गई हैं। स्वाति बहुत पेन दिया है स्टॉक ने, इसके पियर्स सफारी वफारी क्या मल्टीबैगर्स बने और वीआईपी ने कुछ नहीं करके दिया। ये तो कंपनी का मैनेजमेंट आके, कंपनी के प्रमोटर्स आके खुद सीएनबी में एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमसे नहीं हुआ, हमने बेचा ही इसीलिए कि जिनको दे रहे हैं धंधा बहुत अच्छा है, हालात सुधरेंगे। तो एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आए इसीलिए कि वैल्यू क्रिएट कर देगा। मीरा मैम को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वीआईपी से, लेकिन इस बदलाव के बीच होल्ड करूं या नहीं करूं, या आप व्यू दो। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, नो वंडर, और आपका काफी हायर लेवल्स पे बाइंग हुआ है। टेक्निकली अगर बात करें तो आज उसने 200 डे मूविंग एवरेजेस का लेवल्स टेस्ट किए हैं, सपोर्ट लेके हमें छोटी बहुत बाउंस बैक रैली देखने मिल रहे हैं। मैक्सिमम डाउनसाइड मैडम 370 टू 360 के रेंज तक है, वहां तक मैक्सिमम फॉल हो सकता है एंड वहां से वापिस एक हमें काफी अच्छी रिकवरी रैली देखने मिल सकती है। मैं कहूंगी कि आप इतना पेशेंसली होल्ड किया है और थोड़ा टाइम होल्ड कीजिए, अगर कोई भी डेप्थ आता है 370 के आसपास तो आप एवरेज आउट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है, कोई मेजर मुझे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नेचर्स नजर नहीं आ रहे हैं। अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैं टारगेट दूंगी 470 के वापस लेवल हमें देखने मिलेंगे, उसके ऊपर 520 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं, तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। लंबे नजरिए के लिए आप होल्ड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक। हाँ, अब इतना टाइम दिया, पेन झेला, तो मेरे ख्याल से ये रुकने का समय, होल्ड करना सही स्ट्रैटेजी होगी मैम। होपफुली आने वाले समय में डिसेंट अपसाइड जिस स्टॉक डिलीवर कर रहा हूं। स्वाति ने जो टारगेट्स दिए वो आप लोग की स्क्रीन पे। एक बात है मीरा मैम, वो गोल्ड वोल्ड का तो इशू नहीं, एक डर लगने लगा आजकल हिंदुस्तान में स्ट्रीट डॉग्स बहुत हो गए। वो बहुत सारे डॉग लवर्स को बुरा लगेगा, लेकिन डर लगने लगा, मुझे तो डर लगने लगा आजकल बाहर बाहर जाने में।
स्वाति, आपकी कॉलोनी सोसाइटी में सब ठीक है क्या? यस यस, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे ही आसपास गड़बड़ है। अश्विनी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मुंबई से अश्विनी घिराडे जी जुड़ती हुई। अश्विनी मैम, कब से स्टॉक मार्केट में आप हो, कितना समय हो गया? 2 साल हो गए सर, 2 years। अरे बहुत साल कहाँ हुए, फिर तो अभी ताजा ताजा है। अश्विनी मैम, कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? ट्रेड करते हो या लंबी अवधि के लिए चुनते हो, और चुनते हो तो कैसे चुनते हो? स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ और चार्ट स्टडी करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो? हाँ, स्विंग ट्रेड भी करती हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ। तो इंट्राडे वगैरह नहीं है, अभी तक सीख रही हूँ। तो अभी ये माजदा डॉक का 1031 पे लिया है, तो इसको क्या करना चाहिए, सलाह चाहिए थी। ये कौन सा वाला है? ये स्विंग वाला है कि लंबी अवधि वाला है? लंबी अवधि वाला है, पर अच्छा प्रॉफिट है। तो अभी मतलब CNBC आवाज पे ही सुना था कि 25,000 तक 2500 तक आ सकता है अभी। तो अभी प्रॉफिट बुक करके बाद में ले, क्या अभी बने रहे मजगा डॉक में? डायरेक्टर साहब, स्टॉक दिखाने का मन नहीं कर रहा क्या आपका? हाँ, नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, डायरेक्टर साहब हमारे जाग नहीं रहे। हाँ, ये आया अब स्टॉक। मुनाफा बांध लें या बने रहें, ऐसा करूं ना अश्विनी मैम सवाल? यस। स्वाति, क्या करोगे आप? बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है मैम की, 1000 रुपया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अश्विनी जी, डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अपने बाइंग किए हैं। टेक्निकली जितना भी हम लोग ने भी फॉल देखा है लास्ट फ्यू मंथ से, वो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ने देखी है। आज उसने काफी दिनों से, 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 200 DA मूविंग एवरेज टेस्ट करके उसके ऊपर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। मैं कहूंगी कि बने रहिएगा। नीचे में काफी क्लस्टर सपोर्ट्स बन चुके हैं 2620 का, वो प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में पोटेंशियल है वापस 3000 टू 3200 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो होल्ड फ्रॉम माय एंड विद अ प्रॉफिट स्टॉप लॉस ऑफ 2620। 2620 पे अपना स्टॉप लॉस रख दें। कहीं मामला गड़बड़ाया तो अपन बढ़िया मुनाफे के साथ एग्जिट कर जाएंगे। दमखम रहा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा और बढ़िया मुनाफा बुना रहे होंगे अपन। अच्छी स्ट्रैटेजी है अश्विनी मैम, ये ध्यान रखिएगा। 2620 वो अपना एसएल हो गया। अहमदाबाद से शालिनी उदारे जी जुड़ती हुई। शालिनी मैम, हाय। शालिनी मैम, ये आरबीआई गवर्नर तो आप ही के शहर में आए हुए हैं आज, ऐसा लग रहा है। जी सर। है ना? हाँ, क्योंकि अगर केतन ने भेजा है तो उसके अलावा अहमदाबाद में थे। क्या हो रहा है अहमदाबाद में? उन्होंने ऐसा क्यों पहना था ये सर पे? सर मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो सारा दिन बस शेयर मार्केट ही देखती रहती हूँ, आपका चैनल देखती रहती हूँ, कुछ आइडिया नहीं है सर मुझे। सारा दिन मतलब सुना कितने था, बजे से ये शुरू करते हो आप? मेरे कान में पड़ी थी कि वो आए हुए हैं। ये सारा दिन मतलब कितने बजे शुरू करते हो आप चैनल देखना? सर देखिए, 8:15 बजे से शुरू हो जाता है। छोड़ो, 7 बजे से हम लोग जगे रहते हैं आपके लिए। आप 8:15 बजे आते हो तो फायदा क्या है? सारा दिन कैसे हुआ? नहीं सर, 8:15 बजे से पहले काम होता है सर, तो वो कैसे काम करते करते भी तो देख सकते हो। वो पॉसिबल नहीं है सर, ट्राई किया था, पॉसिबल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मेरा शो 8 बजे करो यार, 7 वाला। सॉरी, मैं डॉक्टर साहब को कह रहा हूँ मेरा 7 बजे शो 8 बजे करो आपसे। अच्छा शालिनी मैम, पहला सवाल। सर मेरा पहला सवाल है, 3 दिग्गज कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट, MCX और अदानी पावर। ये अभी स्प्लिट्स हो रहे हैं सर, तो मेरा सवाल ये है कि स्प्लिट होने से पहले या स्प्लिट होने के बाद इसमें एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, इससे कोई लेना नहीं होना चाहिए। लॉजिक ये कहता है कि अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो खरीदना है, टेक्निकली स्ट्रांग है तो खरीदना है। स्प्लिट और बोनस सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट्स है मैम, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पर ठीक है, ये सवाल का जवाब स्वाति बेहतर देंगी, मैं नहीं। स्वाति, आप लोग ऐसा करते हो क्या? स्प्लिट पे आने वाले कोई स्टॉक हो तो स्प्लिट से पहले ले लूं या स्प्लिट के बाद विभाजित जो स्टॉक है उसमें एंट्री करूं, ऐसा कॉल लेते हो क्या आप लोग? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ये एनालिसिस राइट जाए कि स्प्लिट के बाद ही अच्छी मोमेंटम रैली हो, पहले नहीं होगी, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, कोई कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, कैसे भाव काफी ऊपर में हो चुका होता है, ज्यादा हाई वैल्यूज पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते, इसलिए बोनस स्प्लिट्स ये हो जाते हैं। तो अगर आपकी राय पॉजिटिव है तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी अपन कोई भी स्टॉक्स ले सकते हैं। अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट और MCX की बात करो और दोनों में मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं ऑन टेक्निकल बेसिस पे, तो मुझे MCX काफी अच्छा लग रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट लंबे नजरिए के लिए अच्छा। So I am back now. Market is again trying to take out the today's high, which is around 476, 475, 476.
like I said in the morning, there will be one attempt to give a threat to the 24,500 call writers, and my view is that at least once the market should cross 24,500 around 24,520 and then may retrace back. That there is a possibility, because there is too much of selling that has taken place last week. Let's just check out the options numbers here. Still they continue to write no, I think last 30 minutes we are started seeing 24,500 call being getting squared off, and 24,500 put is being written to some small extent, even though it is, and now 24,400 is developing into a good support, because we see there is no increase in writing in put, and it's almost 1 to 0.6 ratio there. But 24,500 unless and until it gets challenged out, and if you see the price currently at 105. So morning also I did say that 130 to 140 there is a heavy volume zone for 24,500. As it nears by, there will be a good amount of short covering. For that to happen, I think Nifty has to move another 30 to 40 points, meaning that it should cross 24,500 and 10 to 520. Once it start crossing that, I think these 24,500 call raters will start running for cover. Let us check whether it is a good buy zone or not. This particular you can say to some extent, but one second. So one can try with a stop loss of almost 94. You can take days as low as the top 87 as stop loss, and one can try. Let's see. But during moving, it's above yellow line and there is all green. So 24,500. I would suggest rather we wait till 24,480. Once the Nifty goes near that, there will be a retracement, and then again when it tries to cross 24,480, then I think we can enter into this call, because then there can be a bit of a jump. First target will be but if somebody takes a risk and buys it, the first target is 124. The other option one can think of is again entering into ड्रीम सिटी। तो मैंने कहा ड्रीम में तो यही गलियाँ आती हैं। तो जब ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ बड़ा करने के लिए बड़े शहर में रहने की ज़रूरत नहीं है,
तब लगा कि लाइफ में ग्रो किया। कशी ताई, ऐसे बॉय मिलते मुंबई में? चांस ही नहीं। SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Correct. So Nifty is making one more attempt to cross 24,480. See, I keep repeating it. Usually 20, 50, 80 between two strike prices of 100 is always a challenge for Nifty. Let's see whether it crosses this. It is crossing. I think we can attempt another trade. Even though we have not been lucky so much on today. Like stop loss can be around 1, 2, 3, 4, 90, 94. In fact, you can we will revise it now once it starts moving up or down. Based on that, we will take a call. As of now, that's the case. Because since it is taken out, technically why we have purchased it is, if you see, the previous day high was just under 76 and now it has almost touched 80. That is the reason we have taken this call, because once usually a day is taken, there will be a further buying will usually come. In the same way, when it goes to day low, there will be a support and you can always try for a call. And given that other couple of other reasons is, number one, it is above our yellow line, which is our first criterion, above CPR, and then we have all the 5 indicators lined up as green, and then there is a green volume also.
So it at this point it satisfies all the requirements for us to take a position on the long side. That is the reason it's taken. So let's see. And no system is perfect, so at least I think 124 should be easily achievable. That is the first target. So let me put that also. $124, and the second target is 145. Let us take it as 144. Usually for the pivot, usually it will come down. So 124 is the first. There you go. Already it is 119 now. It has made 118. It has made a 118 high. So 124 should come pretty quickly in my view, and whether it touches 145 or not, we will see. The second, it's the Nifty holds above 24,480, then it will definitely attempt to cross 24,520. See, already 121 now. 121. So 124 should be should be achieved any moment. And if it crosses and sustains, then we will see very quickly 145 also. 125 is reached. First target achieved. At what time? 13:1 itself, 01. So 131 now. You can start trailing the, we can revise the SL revised to 119, 1 second. You can say how much. SL revised to 114. So that 5 rupees minimum we will get. That will take care of expenses even if this thing knocks out. I think you should have it as 144 as the target. So because it will be just like second, it will go touch and it will immediately retrace. But if it sustains above 145, then the first target is all the way up to 166. That is your third target. Above 144, it is 166 will be the target. Now 124 should work as support.
So I think we reverse this thing to 140. I hope it doesn't come there. And hope is never a strategy, as they say. So let's see. Lot of these call writers are running away, so the volume is there is negative volume, meaning people have now call writers are trying to start. When you have a large negative, heavy, 124 again, it should cross. Once it crosses, then so far it's been good going. Let's see, from 109 to 120. So see, they will try to bring the Nifty price below to 24,280. I mean 480. So that is when the prices of option also will drop dramatically. If it, as long as it stays above, the price of option also will stay above. So it is sustaining above the stop loss price. That's good. See whether, let us see whether the next spike comes. So the next spike should ideally cross 133. Then only there will be continuous momentum and the prices can keep going up. Otherwise, what will happen, you are seeing, as you are seeing, the Nifty, this candle is becoming into a red candle. Maybe a real typical stop loss now. See, I think our stop loss has been hit. No. Again, Nifty has to cross 24,480 for it to gain momentum. If this candle, the current candle, doesn't cross 24,480, then this candle also likely to become a red candle. Volume is not picking up compared to the earlier candles. This volume is not picking up.
yeah, I think if this becomes a good big green candle, then we can get our 140 also today. Let's see whether it crosses 24,480. As I told you, oh, that's the least hit. You hardly have what, how many? 6. ₹450. This mic making a, so at some point I think today Nifty will cross 24,500 because it is trying to make higher high. If you see in a higher time frame, you will know very clearly what is happening. Let's see at higher time frame. These are 9 minutes currently, because that is what our strategy is run. That is the reason I maintain 9 minutes, so that my strategy numbers can be displayed. If you see for 30 minutes, see, so from 30 minutes from the morning low, that is our or magical yellow line. Once it went near that, and from there it started to move up. 1, 2, 3. So last 1.5 hours it has been making only green candles in 30 minutes time frame. So let's see. But in multiple time frames, our strategy is still showing it as shorts. I mean, short Nifty. That can change. It is not necessarily all trades will end in profit. And as of now, in the lower time frames, already the strategy is yet to change. At some point, when it changes, then we will know very clearly. At least for some time, the market is going to move up. So roughly you can say today roughly no profit, no loss, only brokerage is gone. So let's see how the option writers will play, at least for short term. At least for today, I am not seeing Nifty closing in negative.
I won't be surprised if closes around another 50 to 75 points more. Yes, so much selling has been taken place. The market is really what you call as oversold territory. $127 is a key option price number. That is currently it is what at 117 or 118. If it one candle of 5 minutes closes above 127, then that definitely Nifty, our this target of 144 etc. will definitely come. Both the option price as well as Nifty, our proprietary momentum meter is showing is a positive. So one can dip in again in this 24,500 call, and also by 130, before 130 there has to be some amount of a movement, positive movement every day you can see. I'm not sure whether it is because of Europe or anything, but between 1 o'clock to 1:30 usually there is a positive thing. Let's see. Slowly but steadily, it has to sustain above, but from morning what we can see is that volume is always been green. See how the setup helps you here. From morning we started having green shoots in our volume. Nifty started to rise, and as the volume starts to peter out, the Nifty is started to fall, and then there was good one big candle. After that again Nifty starting to turn green, the volume started to turn green, and one by one indicators also turned to green. From here, by the time all the around by 12:30 or something, if everything has become green, the market started to move up again. So it is at 110 now, 111, 112. There is some issue with OBS connectivity. No, it is streaming.
let us move this thing. Okay, now currently we don't have any call that is going on, so we tried on 24,500. Even now, technically speaking, since we are on no profit no loss cases, usually what I always suggest is, you do 2 or 3 trades, and if 2 or 3 days you are slightly not able to get the momentum correctly or our entry point, etc., then you stay away from trading. Over trading is what will kill you. Of course, now currently it is 114 or 115, can go to 144 also, but that doesn't mean, so once you are not getting entry and exits in a right manner, because it happens in many of the days, there is no point in doing over trading and trying to buy at each fall and trying to see whether it goes up, etc., and all that. But technically speaking, even now both Nifty as well as this option, everything is fine and green except volume for this option. There is good amount of people running, selling, squaring it off. Though there are more sellers than buyers. That is a bit scary always on an option chart. If there are more seller, means the market is going to go against that price, meaning the market will fall. But as of now, it looks even in 30-minute charts also, just few minutes back we saw market is likely to move up only. Maybe the move will come after 2:30 or after 1:30 also, when Europe is supposed to be joining Indian market. If you have any share that needs to be looked at in our setup, so we have a chart layout for shares, so we can show that how it is looking, whether on a day chart whether the share is doing better or no, or it is on buy mode or sell mode. If you have anything, please put it in the comment, then we will show you the chart. See, like I said, this 80, how much it is struggling, trying to stay above 80, because the second it stays above 80 for a couple of candles, then zoom 520 will come in no time. Then 520 will become the next resistance. Then 500 will come, 500 will become the support. That is how market behaves. Each time it will go. See all these 3 candles. Let us draw a line on kind of 24,480. So we will know whether when it is crossing. See how many times it is trying to cross. So far already 4 candles. One shot through 24,480, but was not able to sustain. You need to have patience, and you need to have a setup, and you need to have a system.
this blindly approaching, this is not lottery. Lottery is the only one where luck only can favor you. No, there cannot be any strategy. In the same way, option also, you should not approach it like a lottery. Slowly it is creeping up to 115, 116. The movie and for a change, the volume is after a couple of candles, volume for the option is again coming in. So the buying will be done by both the fresh people who are entering into this option. The other one will be those who have returned, like I said in the morning, between 130 to 140. So some of them looking at the market with their setup, if they think the market is going to go, they will slowly start closing it by buying. So that is when the spike in price as well as in volume will come. But today is only Monday, unless and until Nifty conclusively takes away 24,500 with huge volumes and there is good news, etc. and all that, the option traders will wait, even for Tuesday, tomorrow. It is 4 days only. Couple of more days. If it is price is between 24,400 and 500, these option prices will come down to 30, 40, and then they will square off. Because there is a theta decay. Now you can see in the chart, it is trying to open above 24,480. The option price is shooting up. Usually before our Nifty prices goes up, option prices will tell you what the Nifty is going to do. It will follow. Actually, it is not the other way around. It is not because of Nifty prices option behavior will come much earlier. If an option prices are going up, then you will see within next 10-15 seconds the price Nifty prices also will go up. That is how it behaves. So it's already 123 now. That's it. See the jump in within second from 80. It was trying to cross. Fourth channel, when fourth candle it crossed, it jumped from 80 to 500 in a no second, and option also jumped to 123. Let's see. So 124 is again a kind of a resistance for option price, as well as 500 is a resistance for Nifty. Now it will spend time, between 80 and 500, and then another push will come. Let us see, because before that 130, 130, 135, either way a big movement will come, whether on the upside or on the downside. Once this option price 24,500 call crosses 124, within no time, it will touch 145. Just keep watching the option price of 24,500. The second, for a minute, it crosses 124.50 or 124.60 and sustains, there will be a spike. So I don't know, you people that heard about
gamma explosion. This is where it takes place. Beyond 124, then 1 to 145, and then all the way up to 166. So Nifty is sustaining above 80. So on all probability it should cross between now and 240, 140. Otherwise it can drop. It can again come back to 24,428. That is the CPR. Any one of the thing can happen in next 10 to 15 minutes. If it's slow, if it sustains here, that is above 24,480 for another 10-15 minutes, then we will see another 50 to 75 points getting added in Nifty. So now this candle is crucial. Volume is good both on Nifty as well as on the option. So this high of 506 needs to be taken out. That is 507. When Nifty crosses 500 and 507, you will see the option crossing 124. And nearing 124 now. Let's see how it will jump once it sustains even for few seconds above 124. If it is not able to cross 500, then everything will reverse very quickly. In couple of candles, you will find even 24,480 is taken out, and Nifty will be back to 24,460. Both will happen very swiftly. But the build-up is good. Let's see. How much time it is spending on between 90 to 500, here between 120 to 123.
It is testing our patience. Volume is building up in Nifty slowly on positive side. See 144, 124 crossed briefly. Let's see. On 24, it's not able to sustain above 124, at least as of now. Now we should see, because here the volume is slowly inching up in Nifty. So there can be one sudden spike or a one sudden spike down. The yellow line, you see, at some point it should cross above this 80. Then there will be a bigger short covering. On 24, sustaining, 124, 125, 124, 125. Now that's it. See, I will start jumping now. 126, and here it is exactly 500. So this has to sustain above 500 and price has to sustain above 124. Then there will be another rally. If it struggles for more more minute, then again it will collapse. $501, $502, I think it is sustaining above 500. So there is a possibility that it will try to rattle the call raters. It is entering into call rater zone now. Let's see. On 29 now. It should pretty quickly move to 143. That is what technically it is there. It should pretty quickly move to 143.
you should be aware that there will be a stop loss hunting candle now will take place. So those who have positions on call should have either quickly get out again, get in, or have a deep stop loss. There will be a stop loss hunting candle now, because it is trying to sustain above 500. The call raters will try to ensure the price at least once comes down again. Now 124 should act as support, like I said earlier, and 500 should act as support. If the next candle opens above 504, then we will quickly see the 145. Very, very quickly we will see. Volume is good, both on Nifty as well as on there is selling again starting in call options. It's not good sign. $127 now. So Nifty is sustaining about 24,500 for almost 15 minutes. That's a very good sign. If it continues in the last 1 hour, there can be a bigger short covering. Unless and until there is a one basket selling and some Jane Street kind of a fellow brings it down in one swoop. Slowly it is creeping up and there can be one big jump. The good thing is that if you see our yellow line is catching up with this 24,480. Once it stays up, becomes above this 24,480, that will give even further momentum to Nifty. The fight between call raters and bulls are going on. See, Nifty Bank has got some unfinished business, so that can propel the market higher. I think Nifty
is beginning to make its move. One side, either side, there will be a big move now, either up or down. Hopefully, let us see whether it makes it up, so that I think the erosion in our portfolio that has taken place in the last 2-3 weeks, there will be some level of respite to it. I think you can enter again, but with a very strict stop loss of 123. Put it as 122. And we'll keep revising it. See, now the first target of 145 should come now, 144. Then the next target should be, the second target of 144 should come. Then the next target, let me see what will be the next target. Next target will be a 166. Target 3 will be 166.
This is a stop loss hunting candle. Nifty below 500, close your call.
Yeah. Um, 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 um. Okay, slowly it is creeping up, and here 25 to 520, which I said will be bit critical for the call writers. At least know those shaky hands. Those who want to play till Thursday, they will be different, but those I think they will start to get away, and you will see volume getting pumped up both in Nifty as well as in option thing. Let's see. Above 145, as by my prediction, it will explode very quickly to 166 and then to even higher number. Let us see whether no, it will happen today or not. Slowly it is trying to go to 145. It should go pretty quickly to 145. There again it will struggle. That's my view. Let's see. Zoom, it should go now. It is clear that 24,500 call writers are going to run away now. That is how it looks. If it happens, then we will see fun. Let's see what is happening on the
24,500 put rating is started to happen now, because today is only Monday, and today if we close about 24,500, I think tomorrow there will be a short covering. Oh, that's all. 33 minutes over, because there was loss air conveying. That's all. Okay. Wow. Volume is not building up here beyond 24,530. That's a bit worry. Let us see. The candle has just now started, but I'm not seeing good volume numbers here. Should be one spike. I think call writers are jumping out. Time. sorry. Oh, absolutely nobody is there. Unfortunately, no audience to see the gamma explosion. No problem. யாருமே இல்லாத கடையில் நம்ம டீ ஆற்றுவோம்.
I don't know how many is watching. We may see a gamma explosion above 145. Within no seconds, it should reach 166 and then above, provided it crosses 145. If it slowly creeps up, nothing will happen. That is around from 142 to 141, 142, it should jump to 145, then we will see an explosion. Otherwise, no. So, let us change the stop loss now to 127. Let me check again once again. 131, sorry, 123. Put it on 24. So we will take a small loss of 4,300 rupees plus brokerage. But unfortunately, this a lot of call writers are getting away from 24,500 slowly. So if they are trying to maintain this and balance it, and then slowly they exit out, then you won't see any big explosive price rise. This has to happen only by a big jump in Nifty, then it will explode. Nifty is now at 45. Let's see. All our indicators are green. There is green volume. All 5 is green. It is above. The strategies also have moved on to long from short. It is above this yellow line. Technically speaking, we are at good ground.
let us hold it. One stop loss hunting candle is coming, be careful. That's it. I think even whatever little selling was trying to be made, that got knocked off by the buyers. So let's see now. This time it should cross 140 in this jump. No. This candle is crucial. What we are seeing here, this has to end in green. Otherwise, you will have a big stop loss candle. The call writers must be trying to bring the market down, because beyond 24,450, 550, they are in for a big trouble. Volume is still positive, so that is one thing good.
ஆச்சரியமாக இருக்குது. I don't know how this bloody bugger closed it. தப்புன்னு போய்ட்றா அப்படியே.
ready to explode now. It is 141. So let it cross 144, then we 145, then we will have fun. And 43.6. Let it, now it is about to cross 145 point, exactly, let me tell you the number, 145.44. If it is crossed now, zoom, 149, 150, 151, 152, 154, 155. $159. Oh, wow. Now it is 166 minimum, it has to close, go there, and then it will see whether it will cross that also. It should cross, ideally speaking. Let's see where this candle ends, this 5 minutes candle of the option price. 70, it should 570 means yesterday's high is 588. Let's see whether it touches it or not. Now it has to take out 166 now. Let's see whether it will do it or not. Now let us increase the stop loss to to 148.6.3. 149 also we can keep. Let us make the money. Revised. Should touch 166. I mean, I'm just waiting for that. In another 10 seconds this candle should end. Let's see where the next candle starts. That will give us a view whether next thrust is coming or not. Yes. Oh.
ஐயாயிரம் பண்ணியாச்சு விட்டுடு. ஐயாயிரம் எவ்வளோ 183.
Good. So it couldn't make the 166, but it made a high of 159.20. So that was a good trade. But anyway, our stop loss got it at 150. So we made another 22 rupees. That's not bad. So first for on this thing now 22 rupees means 1500, 1650 profit. See, our capital is also just below 10,000. No, all our costs what we give is no just 10,000 rupees, so that the risk is not high. Now this kind of candle formation is not a good one. All right, not buy. Okay, that's it. I sold it then in that. I think today's trading is done. I think it will be only sideways movement because after 2:30 not much usually happens nowadays. We will close at 3 o'clock. We will again rejoin tomorrow morning. As of now, Nifty is in no man's land. It is between 24,500 and 24,600 call writers zone. I am not. Let us see how many people have got out of 24,500. So 24,500 has become a very strong support, and 24,600 continues to be a resistance. So we will see what will happen to it tomorrow. 24,500 is still climbing. Now it has crossed it is crossing 166. It is likely to cross now.
Nifty is making one last attempt to cross 25 or 600 also. That will rattle 24,500 writers now. Still we have tremendous amount of OI. It is almost 89 lakhs people who got. So at some point they will run for cover. I don't know whether it happens today, but if it happens, then from 3 o'clock we will have a massive move. But I don't know. It may not happen also. One sixty. Yesterday's high. Let us see whether Nifty takes it out. Then it will be making a inside candle. Wow. Engulfing. Bullish engulfing. Based on that we can take some positions. So, what we are seeing in a day, oh, it seems to be making a technical bottom, short-term bottom.
like market prices. सही सही as predicted, it is going to touch 166. I think it is already made one high of that. It made a high at almost 166.75. This time if it crosses, then it will explode further. Let's see. But it has to stay above 166.95. So roughly you can take it as 167. Crosses 167, then boom. Can touch 250 by tomorrow. But this is risky. There is a decay also will happen. Let's see where it closes today. Then we'll take a call. Because 166 will be tough to cross, because that means that 24,600 call writers also will already be in danger. They will try their best to bring it down, that is for sure. So it will be a tug of war, because same day two major call rating zones is being taken out, and if it closes on high tomorrow, it will, I think what will happen is before, after 3:15 also, if Nifty is above 24,600, I'm pretty sure last 15 minutes there will be a bigger short covering, because whenever
an index, no, it closes on high of the day, it will always be taken. The next day there will be minimum 30 to 40 points gap up. So even then, even the theta decay won't help the call writers. So they will be running for cover. If Nifty continues to stay above 25,600 till 350, that's my view. Let's see whether I'm right or wrong. And luckily our stop loss got hit at 150, I think 166, I think, sorry, 150, so we could make. But if we had continued, probably another 750 to 900 rupees we would have made per lot. That's fine. You should be happy with what we got. Because we are trying to play very safe out here. The whole idea is to have just 10 to 15,000 and then within that trade and try to make money with capital intact. No, it is better to have capital intact than lose money. See, the call writers are trying their best to close it before. That is what will happen. Like as I was saying, because it is already they would have lost some amount of money in 24,500. If 24,600 is also taken out, if you see, they have not much has been written beyond 25,500. See, it's all very, very small towers. 700, 750 and all, nothing is there. It's all then only 25,000 where there is a huge this thing. So it will have a free run. That is the reason I was telling that if it crosses and stays above 24,600 today, even today itself, there can be some short covering from at 320. Otherwise, tomorrow definitely we will have a good day to start with. If it closes below 600 today, then tomorrow we can expect a gap down based on that, people. But still, we are ending at a high point, so that's a good sign actually. Very good sign for an index which has very recently bottomed out. So then what will be considered? Because today's candle will become a bullish engulfing compared to what yesterday, because it's already taken yesterday's high, but it didn't go below yesterday's low. So actually, ideally speaking, a bullish engulfing means it should have gone below yesterday's low and then take out yesterday's high. Then that would have been a more powerful candle. But even otherwise, it's good because it has made a higher low and taken out previous day high. Let's see whether there is one more attempt on 315. No, I think they are trying to bring the market down, so it closes much below 24,000. Oh, good.
Okay, market is ending at a good high note, and tomorrow if there is a gap up, then market will rally another 100 to 200 points before August 14 15th. That is guaranteed, because there is absolutely no resistance from options. If you see, so 24,600 is the only last hurdle. After that you got only little bit, the quantities are much less, and that can be taken out. So if 25,600 itself is going to be a challenge, means the Nifty has to end much lower today, meaning somewhere below this yellow line. Otherwise tomorrow again there will be a follow through for today's buy. That is what will happen, and then we may have a positive closure tomorrow also. Then this recent low will be considered as a technically Nifty bottoming out. But provided all that, because Nifty has to see in last 15 minutes, the call raters will try to bring it down the Nifty to that extent, so that they don't know they can make money tomorrow also. Let's see. Below 80, 24 580, if it closes, then we are in trouble tomorrow. Otherwise, if it is above 24,600, that's a good, really good sign. Because as of now, 24,600 CE is quoting at 1 second. At 91 rupees, meaning the call raters are expecting Nifty will not go beyond 24,690 tomorrow. Or before this expiry. See, in couple of candles they brought down Nifty from almost 24,600 to 21 points. Let us see. Thanks, Banu. I think, Banu, tomorrow when you are watching, you just ask whatever doubts you have, because many I think all the people watch, they don't write any kind of comment or anything like that. If you start writing, then it will be more engaging. The whole idea is to be interactive, not monologue commentary from my side. So tomorrow when you are joining, please feel free to make your comments, so that we will have a good understanding of what's actually happening. Please subscribe, share, and like. That is a good encouragement for us. So you do vlogs, is it?
So those who are having no kind of they want to gamble. Let's see whether we can do for those people anything. My thinking will be that to see whether 24,700 call, which is quoting at 49 rupees, 50 rupees. So meaning that the Nifty has to end above 24,750 for it to make a profit. Let us see whether that will happen or not. For example, I think we are at R5, so 4611 will be the first hurdle tomorrow, and after that actually there is no hurdle. No, you can actually try out this 24,700, but there is not, since not much is there in 24,700 and 800. Okay, let's see what is the call price of 24,800. Let us keep a watch on these two, 24,700 and 800. I think tomorrow first thing in the morning, if it's not a very huge gap up, there will be theta decay on this, and looking at first 10-15 minutes we may pick up something for kind of a hero to zero for this week. Good. I think more or less we are done for the day. So let me start making my Excel sheet, which I report in my Telegram. So you can continue to watch that. No, absolutely no issue. Options, list of trades. Yes, here we go. Okay, so what was the Nifty trades today? So what we do is we look at the Telegram channel. So stop loss gold, okay, stop gold, close Nifty short position and go long. Okay, so I think that was, we are anyway revamping this strategy further. During this course of this week there will be some more changes on this. What's happening? Okay, there is only one. Okay, 146. Eleven 08/2025. So long. Ongoing. Closed. So close at 588. So this is end up buying some 70-80 points loss. 24,588. Okay, equal to, let's see where it closes to the NIFTY. We will wait for it to close. Okay, and then I think we need to add gold. Gold has been not so successful also. Sideways market is always a killing one.
go short at 100015. Okay. Was it long previously? Okay. Short again. No. Stop loss gold future long at 100430. Okay. So this one is gone. So this is 100430. Okay. This is ongoing. This is closed. So what is this short is at 10015. Let's see what is the gold price. So Nifty, they have brought it down to 564. So and it is entering below the yellow line. That's not a good sign. And there has been a good spike in negative volume, and also we see 5 out of 5, 2 has already become red. Let us hope there is a small gap up tomorrow, then it will continue. And I don't think we should carry out any call or long or short positions, because if you have any options, please close it now, because tomorrow morning it will start flat. That's my view. Okay. What is the gold price? No, we have gold here. No. Hmm. 99850. Anyway, okay. So it is, at least now it is 99850. Okay. Thank you. Good day. Yeah, I'm just shutting the shutter now. Stop streaming.